Good morning, everyone. We are informed Honorable Prime Minister is about to arrive. So this is the last reminder. Some of the sites are still, they haven't switched on their cameras. Please switch on your cameras. Thank you.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास, आदरणीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, आदरणीय राज्य मंत्रीगण, एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर आयोजित वेबिनार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। सर, इस वेबिनार में सभी स्टेक होल्डर्स, किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक, स्वयं सहायता समूह की दीदियां, एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस और कॉपरेटिव्स के प्रतिनिधि जुड़े हैं। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के अधिकारीगण भी साथ में जुड़े हैं। सर, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। सर, भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हमारे किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक भाई बहनों का कल्याण सभी नीतिगत निर्णयों के केंद्र में रहा है। पिछले एक दशक में कृषि और संबद्ध क्षेत्र और ग्रामीण विकास में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की गई है। सरकारी और निजी निवेश में वृद्धि, रिकॉर्ड उत्पादन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मार्केट और एक्सपोर्ट्स में उल्लेखनीय वृद्धि, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, सैचुरेशन अप्रोच के साथ आवास, शौचालय, सड़क, बिजली, पानी जैसी बेसिक एमिनिटीज की अवेलेबिलिटी इसके मुख्य कंपोनेंट्स रहे हैं। इस वर्ष का बजट इसी मजबूत नींव पर आधारित है। बजट कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को उच्च उत्पादकता, उच्च उद्यमशीलता, उच्च मूल्य और उच्च आय की ओर ले जाएगा। कृषि, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए की गई घोषणाओं का उद्देश्य विविधीकरण को गति देना, उद्यमशीलता और उत्पादकता को बढ़ाना, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का विस्तार करना, निर्यात को मजबूती प्रदान करना और आय आधारित डिजिटली सशक्त विकास सुनिश्चित करना है। छोटे और सीमांत किसान, युवा और नारी शक्ति इन उद्देश्यों के केंद्र बिंदु में रखा गया है। सर, हम सभी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए सादर अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर। नमस्कार। बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर 2 वेबिनार हो चुके हैं। आज रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है। अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो, बजट का पाई पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है उसको परिपूर्ण कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है। साथियों, आप सभी जानते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को
4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। साथियों, आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। अब आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं, खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है। ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे हो, आप सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को स्केल करते हैं तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री और किसान
एक साथ कैसे आए, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल सेट किए जाए, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉन्शियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए। साथियों, एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें तो हमारे गरीब मछुआरे भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं तो कैसे रिजर्वायर, उसके पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये रूरल प्रॉस्पेरिटी, ग्रामीण समृद्धि के लिए वहां की हाई वैल्यू, हाई इंपैक्ट फैक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए। और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है। और आप आज जो मंथन करेंगे उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा। साथियों, पशुपालन सेक्टर ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। एग्स प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर हैं। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब वन अर्थ वन हेल्थ की बात करता हूं तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फूट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए
एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है। और आपको एक पता है, हम लोगों ने गोवर्धन योजना लागू की है। गांव के पशुओं से निकलना वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, हम गोवर्धन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं। दूध से आय होती है, गोबर से भी आय हो सकती है। और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में, गैस सप्लाई में भी ये गोवर्धन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दे, उसको आगे बढ़ाए। साथियों, हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करता है कि वो अपना दायित्व निभाने में हम उनको कैसे मददरूप हो, हमारे सुझावों को कैसे काम आए। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा, तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। साथियों, ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज ई नेम के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टेक के जरिए, एग्रीकल्चर के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत विस्तार जैसे एआई आधारित प्लेटफॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है जब सिस्टम उसे अपनाए, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफलता हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, एग्री टेक, एग्री फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है, आज जो आप मंथन करेंगे
उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Can we now have the presentation, please, regarding the outline of the budget announcements? Thank you. I welcome all the participants who are joined us in the post-budget webinar on agriculture and rural transformation. Next, please. आप सबको विदित है कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 22 फरवरी को ये कहा, हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं, वे धरती के सच्चे उपासक भी हैं। उनसे यह सीखना चाहिए कि मिट्टी को सोना कैसे बनाया जाता है। आज हमारे किसान परंपरा और तकनीक दोनों का संगम कर रहे हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि अब हमारे किसान केवल उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता, वैल्यू एडिशन और नए बाजार पर भी ध्यान दे रहे हैं। जो इस साल का बजट है वो इसी के इर्द गिर्द और इसी से इंस्पायर्ड और लेटर एंड स्पिरिट में इसको आगे ले जाता है, इस कथन को। नेक्स्ट। आपको सबको ये विदित है कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2026 की स्पीच में ये कहा है कि हम जो बजट है वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है एस्पिरेशंस को अचीवमेंट्स में और संभावनाओं को प्रदर्शन में, ताकि जो भी प्रगति के लाभ हैं वो सभी कृषक और किसान भाइयों को, बहनों तक पहुंच सके। और ये जो बजट है ये 3 कोर कर्तव्यों पर आधारित है, जिसमें गरीब और डिसएडवांटेज, जो वंचित वर्ग है और गरीब है, उनको कैसे हम अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करें, अपने विकास की में सम्मिलित करें, ये 3 कर्तव्यों से स्पष्ट होता है। पहला कर्तव्य जो है वो आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखने का है। दूसरा है कि लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए और उनकी क्षमता का विकास किया जाए। और तीसरा है कि जो सबका साथ सबका विकास का जो दृष्टिकोण है उसको हम अपने को सशक्त करते हुए विकसित भारत के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़े। और इन सभी का जो मुख्य केंद्र बिंदु रखा गया है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिसमें उत्पादकता को भी बढ़ावा देना है, उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना है, ताकि उनके आय में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट। अब मैं आपको जो मुख्य बजट अनाउंसमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताऊंगा। देखिए, पहला जो बजट अनाउंसमेंट पैरा 59 इस स्लाइड में दिख रहा है वो लाइव स्टॉक को डेवलपमेंट और उसके विकास की बात करता है। और इसमें यह बताया गया है कि कैसे हमारे जो वेटनरी प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी को दूर करने के लिए मोर देन इसमें कदम बढ़ाए जाएंगे। It proposes to roll out a loan-linked capital subsidy support schemes for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic labs, breeding facilities in private sector, और collaboration रखा जाएगा between Indian and foreign institution, इसमें उसको सुनिश्चित किया जाएगा। Next, जो नेक्स्ट पैरा है पैरा 77, ये भी पशुपालन से संबंधित है। इसमें जो प्रस्तावित है उसमें सपोर्ट टू एनिमल हस्बेंड्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, और इसके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम की बात की गई है। स्केलिंग अप एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस, enhancement of creation of livestock, dairy and poultry focus integrated value chains, and encourage creation of livestock farmer producer organizations. Next.
पैरा 76 फिशरीज से संबंधित है और ये इसमें दो मुख्य पहल प्रस्तावित हैं। एक है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और 500 रिजर्वायर्स और अमृत सरोवर, और जो फिशरीज का वैल्यू चेन है स्पेशली इन कोस्टल एरियाज उसको कैसे हम और सशक्त बनाएं और मार्केट लिंकेजेस को सशक्त करें इन्वॉल्विंग स्टार्टअप्स, वुमेन लेड ग्रुप्स टुगेदर विद फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, पैरा 78 है, ये कृषि से संबंधित है। जैसे कि आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने भी इसको उल्लेख किया है कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का दृष्टिकोण रखा गया है और उसमें टू डाइवर्सिफाई फार्म आउटपुट्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, enhance farmers' income and create new employment opportunities. We will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa and cashew in coastal areas and agar trees in northeast, और जो हमारे हिमालय क्षेत्र हैं उसमें नट्स सच एज आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स। नेक्स्ट, पैरा 79 अगेन ये एग्रीकल्चर की उसी जो पहला अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में ये आगे उसको विस्तार देता है। इसमें प्रस्तावित किया गया है कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाएगा और उसमें जो इंटरवेंशन प्रस्तावित हैं वो ये हैं कि रिप्लेस करेगा ओल्ड और नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज को विद न्यू सैपलिंग प्लांट्स एंड वेराइटीज इन मेजर कोकोनट एरियाज, ताकि जो कोकोनट पे आश्रित हमारे फार्मर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका समुचित विकास सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पैरा है ये भी उसी का आगे विस्तार है। इसमें बात करते हैं डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर कैश्यू एंड कोकोआ to make India self-reliant in raw cashew and cocoa production and processing and enhance export competitiveness and transform India cashew and India cocoa into a premium global brand by 2030. Next. ये पैरा 81 सैंडलवुड को के ऊपर है और इसमें कहते हैं कि जो इस बारी गवर्नमेंट ने प्रस्ताव किया है कि वी विल पार्टनर विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट फोकस्ड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग to restore the glory of Indian sandalwood ecosystem. Next, पैरा 82 ये अगेन जो हमारे अखरोट, बादाम और खुमानी की पैदावार को कैसे हम आगे बढ़ाएं by rejuvenating old low yielding orchards, expand high density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts, और इसके लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम प्रस्तावित किया जा रहा है जो फार्मर की इनकम को भी बढ़ाएगा और वैल्यू एडिशन यूथ को एंगेज करके इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पहल है उसको ये अनाउंसमेंट और आगे विस्तारित करता है। इसमें प्रपोज किया गया है लॉन्च ऑफ भारत विस्तार, अ मल्टीलिंगुअल AI टूल दैट शैल इंटीग्रेट द एग्री स्टैक पोर्टल्स an ICR package of practice on agriculture practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. Next. पैरा 84 ये ग्रामीण विकास में जो लखपति दीदी कार्यक्रम है उसको उसकी जो प्रगति और उसका जो सक्सेस है उससे ये उसको आगे बिल्डअप करके एक्सपैंड करता है। इसमें प्रपोज किया गया है टू हेल्प वुमेन टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम क्रेडिट लेड लाइवलीहुड्स टू बीइंग ओनर्स ऑफ एंटरप्राइज। सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज शी मार्ट्स की परिकल्पना की गई है जिसको सेटअप किया जाएगा एज अ कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स विद इन द क्लस्टर लेवल फेडरेशन थ्रू इनहांस्ड एंड इनोवेटिव फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, देखिए ये हमारे जो 11 बजट अनाउंसमेंट्स हैं उनको 8 ग्रुप्स में, सब थीम्स में बांटा गया है और यही 8 ब्रेकअवे हमारे सब वेबिनार के थीम्स हैं। तो पहला है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वैल्यू चेन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर्स फॉर फिशरी एंड स्ट्रेंथन फिशरी वैल्यू चेन्स, कोकोनट प्रमोशन स्कीम्स, National Cashew and Cocoa Development Program towards self-reliance and global brand leadership by 2030. Next. जो 5वीं सब थीम है वो है promotion of sandalwood and agarwood through agroforestry,
फ्यूचर स्ट्रैटेजीज फॉर आलमंड, वॉलनट्स, पाइन नट्स, चिलगोजा इन इंडिया। 7वां है भारत विस्तार, AI पावर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। और 8वां है सी मार्ट्स फॉर वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट। अब ये एक एक विषय पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एनिमल हस्बेंड्री वैल्यू चेन। इसमें जो करंट सिनेरियो है उसमें दर्शाया गया है कि हमारा अभी लाइफ स्टॉक की संख्या क्या है, पोल्ट्री की संख्या क्या है, कितने फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं और उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीवीएम में कितना है। इसमें जब आप इस विषय पे चर्चा करेंगे तो इसमें जो चैलेंजेस हैं हमको लगता है उस पर जरूर विचार होना चाहिए, जिसमें शॉर्टेजेस ऑफ वेटनरी एंड पैरावेट प्रोफेशनल्स, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है और खासकर वेटनरी एजुकेशन, एनिमल हेल्थ और ब्रीडिंग सर्विसेज में इसकी काफी कमी देखी जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यू चेन है और खासकर स्मॉल रुमिनेंट्स में डेयरी और पोल्ट्री वैल्यू चेन्स का भी विस्तार की आवश्यकता है। और क्रेडिट और रिस्क कवरेज को भी हमारा उसका एक्सेस, उसकी पहुंच को सुदृढ़ करना है। इस सेक्टर में अभी प्रोड्यूसर ओन्ड इंस्टीट्यूशंस की कमी है और स्पेशली नॉन डेयरी सेक्टर में, तो उसको भी कैसे हम एड्रेस करें, ये इस सब थीम का मुख्य चैलेंजेस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट। जो थीम 2 है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर एंड अमृत सरोवर फॉर फिशरीज एंड स्ट्रेंथन फिशरीज वैल्यू चेन में, जो करंट सिनेरियो में यहाँ पे आपको रिजर्वायर्स का एरिया दिखाया गया, ब्रैकिश वाटर का एरिया है, अमृत सरोवर अभी तक हम लोग के कितने बनाए हैं जो हमारे यहाँ पूरे इंडिया में बने हैं, और फिश प्रोडक्शन अभी हमारा क्या है। इसमें जो आपके चैलेंजेस हैं वो दर्शाए गए हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसमें काफी गैप्स हैं और अनटैप्ड रिजर्वायर का पोटेंशियल जो है वो अनटैप्ड है, अभी उसको हार्नेस करने की जरूरत है। कम्युनिटी बेस्ड एक्वाकल्चर इन अमृत सरोवर, इसको प्रमोट करना है, इसको स्केल करना है, उसके लिए क्या पहल आवश्यकता है। और हमको अपना कोस्टल वैल्यू चेन को हमको इंटीग्रेट भी करना है और उसको स्ट्रेंथन भी करना है। ये सब हमारी इसमें चैलेंजेस हैं जो इसमें आज के वेबिनार में जब डिस्कशंस होंगे तो वो आप लोग इसको दृष्टिगत रखेंगे। नेक्स्ट। थीम सब थीम 3 है कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इसमें नट प्रोडक्शन एरिया, उसमें कितने स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग फार्मर्स, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी का, ये करंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं। चैलेंजेस जो इसमें दिखाए गए हैं वो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कोकोनट का लगातार उसमें गिरावट आ रही है, और उसका एक मुख्य कारण हमारे सेनाइल और ओल्ड प्लांटेशंस हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं, और वो काफी बड़ी संख्या में हमारे प्लांटेशंस में है। पेस्ट और डिजीज आउटब्रेक को भी हमको कंट्रोल करना, उसका प्रबंधन करने का भी हमको क्षमता का विस्तार करना है। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की कमी है और खासकर हाइब्रिड्स, तो उसकी इस इशू को भी एड्रेस करना है। और लिमिटेड वैल्यू चेन है और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा जिसमें विकास की आवश्यकता है वो काफी कम है अभी। और मॉडर्न और साइंटिफिक जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है कल्टीवेशन का, उसका अडॉप्शन बहुत लो है, उसका भी विस्तार की आवश्यकता है। नेक्स्ट। सब थीम 4 जो है वो नेशनल कैश्यू और कोको डेवलपमेंट प्रोग्राम की है। इसमें भी करंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि कहां कितना एरिया में किस क्षेत्र में इसका विस्तार मतलब होता है प्रोडक्शन कल्टीवेशन, कोकोआ का और कैशुआ का दोनों उसके दिखाए गए हैं। जो चैलेंजेस हैं वो काफी सिमिलर हैं जो हमारे कोकोनट के भी चैलेंजेस थे कि हमारे इसके भी प्लांटेशन सेनाइल है, प्रोडक्टिविटी काफी लो है और हम काफी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। स्मॉल सेमी मैकेनाइज्ड यूनिट्स, वीक फार्मर प्रोसेसर लिंकेजेस, ये इसकी समस्याएं हैं। वीक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन है, तो इसको भी हम लोग को एड्रेस करना है गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट। सब थीम 5 जो है वो प्रमोशन ऑफ सैंडलवुड एंड अगरवुड थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री है। इसमें भी करंट सिनेरियो आपको दिखाया गया है कि क्या प्रोडक्शन है, कितने उसमें ट्री अभी हमारे पास बचे हुए हैं देश में, दोनों के, सैंडलवुड के, अगरवुड के, और उसको ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अगरवुड एक्सपोर्ट्स हमारा का कोटा वो भी दर्शाया गया है। देखिए चैलेंजेस इसमें वही है कि हमारा प्रोडक्शन ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है और अब ये कुछ ही राज्यों तक सीमित हो गया है। इसका जो ग्लोबली ये एक इंडिजिनस स्टेटस प्राप्त किया है और इसको हम लोग को एड्रेस करने की जरूरत है।
और जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं उसको भी हमको विचार करना चाहिए कि उसने क्या अपने उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या उसने फार्मर्स और ग्रोअर्स को डिस्करेज किया है। हमारा स्टॉक डिक्लाइन कर गया है और नेचुरल रीजनरेशन भी हिंडर हो रहा है थ्रू इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज। तो ये सब चैलेंजेस को हम लोग को अपने गोइंग फॉरवर्ड इसको एड्रेस करना है और ये डिस्कशन का मुख्य बिंदु बन सकते हैं। नेक्स्ट सब थीम 6 जो है वो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज फॉर आलमंड, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन इंडिया है। इसमें भी करंट सिनेरियो में प्रोडक्शन एरिया बोथ वॉलनट का आलमंड का दर्शाया गया है। इसमें जो हमारे चैलेंजेस हैं वो यही है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ सीडलिंग ओरिएंटेड ऑर्चर्ड्स हैं, इसमें लैक ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज है, पुअर नर्सरी और प्लांटिंग मटेरियल सिस्टम्स है, वीक प्रोसेसिंग ऑन मार्केट इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और पुअर रीजनरेशन ऑफ चिलगोजा। नेक्स्ट सब 7 जो है वो भारत विस्तार से संबंधित है। एआई पावर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। देखिए अभी जो हमारा एआई है वो काफी फ्रैगमेंटेड है डिजिटल इकोसिस्टम, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फार्मर्स की, हमारा एक्सेस और इंक्लूजन में काफी गैप्स है। फार्मर को एक ही सूचना के कई सूचनाओं के लिए अलग अलग पोर्टल पे जाना पड़ता है, अलग कार्यालयों को पहुंच उसका करना पड़ता है। तो ये हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंश्योर करता है और हमको अपना एग्रीकल्चर गवर्नेंस को भी री इमेजिनिंग करना है विद न्यू टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके एआई और डाटा मैनेजमेंट को। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कंबाइन करता है स्कीम्स के इंफॉर्मेशन को, जो लाभार्थी है उसकी एलिजिबिलिटी को भी दर्शाता है, बेनिफिट स्टेटस ऑफ ट्रैकिंग, आईसीआर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, वेदर फोरकास्ट, मंडी प्राइसेस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल। तो ये सब सूचनाओं का आदान मतलब उनको एक्सेस होगा जो भी फार्मर हैं हमारे क्षेत्र में, और उसका ये उपयोग करके वो अपनी कृषि को और बेहतर बना सकते हैं और लाभकारी बना सकते हैं। नेक्स्ट थीम 8 है शी मार्ट्स फॉर रूरल वुमेन एंटरप्राइज। इसमें जो हम लोग का अप्रोच है वो कम्युनिटी ओन्ड ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स एट क्लस्टर लेवल विकसित करना है, बिजनेस टू कंज्यूमर रिटेल हब और बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई हब। इंटरप्राइज को इंटीग्रेट करना है बायर से, जिसमें प्रोड्यूसर ग्रुप्स, प्रोड्यूसर इंटरप्राइज और एफपीओस अहम भूमिका निभा सकते हैं। लाइफ स्टॉक एंड नॉन फार्म इंटरप्राइज और क्लस्टर्स का विकास और डिजिटल और फिजिकल रिटेल इकोसिस्टम को मजबूत करना है। एग्रीगेशन, ग्रेडिंग, वैल्यू चेन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्रोसेसेस दोनों पे काम की आवश्यकता है। क्वालिटी, रेगुलेशन, कंप्लायंस एंड अफोर्डेबल और एडुकेट फाइनेंसिंग। देखिए इसमें चैलेंजेस जो है अभी हमारे लिमिटेड एक्सेस है टू ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन मार्केट्स, हमारी जो दीदियां हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे उत्पादक हैं उनके लिए, और लिमिटेड लोकल मार्केट विजिबिलिटी है। लास्ट माइल रिटेल प्रेजेंस बहुत कमजोर है। इनएडिक्वेट एक्सेस टू टाइमली एंड अफोर्डेबल फाइनेंस की भी कमी है, तो इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए यही जो 8 ब्रेकअवे सेशंस हैं, सो अपेक्षा ये है कि ये अभी जो हम लोग इस प्रेजेंटेशन के बाद ब्रेकअवे करेंगे तो इट विल 8 पैरेलल ब्रेकअवे सेशंस होंगे ऑफ 2 आवर्स 12:30 to 2:30 PM। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है उसको हम कैसे उपयोग करें स्कीम की डिटेलिंग में और टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप में, और जो उनके सजेशन मिले उनको एक एक्शनेबल कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर्स, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और हमारे जो एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेसेस और ट्रेड पार्टनर्स, वैल्यू चेन का उनके पास बहुत अनुभव है। तो वो अनुभव यूज करके हम अपनी डिफिकल्टीज को कैसे दूर करें, ये भी एक उद्देश्य इस वेबिनार का है। और चूंकि हमारा जो पार्टिसिपेशन है पूरे देश से है, सभी रीजन से है, तो हमको अच्छा फीडबैक मिल सकता है फ्रॉम अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज। जब आपका ब्रेकअवे सेशन होगा तो उस समय जो भी वहां पे कोऑर्डिनेटेड प्रेजेंटेशन होंगे एक सब थीम पर, उसमें आपके एक ईमेल आईडी भी शेयर किया जाएगा। तो जो लोग इसमें एक्टिव और या पैसिव मोड में पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास एक ये भी अवसर रहेगा कि उनके अगर कोई सुझाव है तो वो लिखित रूप में भी इस ईमेल आईडी के थ्रू हम लोग को भेज सकते हैं, जिन पे उचित विचार होगा। इसमें हम लोग का जो कंप्लीट ऑल प्रिपरेटरी एक्शंस फॉर इंप्लीमेंटेशन टू बिगिन इन द राइट अर्नेस्ट, ये इसका आगे का हमारा फॉरवर्ड जो आगे का कार्रवाई है वो इसी पे आधारित होगा।
और शाम में 3:30 से कंक्लूडिंग सेशन होगा, जिसमें टाइम बाउंड रोड मैप का इम्प्लीमेंटेशन की जो कार्यनीति बनी है उसको प्रस्तुत करेंगे और हमारे माननीय मंत्रीगण के मार्गदर्शन भी हमको उस दौरान प्राप्त होंगे। मुझे आशा है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया है और जो इसका उद्देश्य है, हम लोग सब मिलकर एक अच्छी कार्यनीति जो इम्प्लीमेंटेबल है और स्कीमेटिक जो गांव तक हमारी सारी उद्देश्य पहुंचे, ये हम बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग ब्रेक करेंगे। थैंक यू सर। Thank you, everyone. Now each of the breakout sessions will begin their own individual
हेलो 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 1 2 3 चेकिंग नंबर एक कांटेक्ट कोड टेबल में हेलो 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 Yes, we can hear you. हेलो सर एम आई ऑडिबल ऑडिबल है, ऑडिबल है। Sure. थैंक यू और चावला सर है। I am there.
you want to speak? I think it was not. So we'll start this webinar in a short while, and I'll repeat the protocols for this webinar. Kindly put on your videos and put off your mics until unless you are requested to speak, and or you want to intervene. We'll give you a chance to intervene, and then तो वीडियो we will. कैमरे के सामने आ रहा है। So I'll request once again to see that everyone is clearly visible on the webinar. So we will start this webinar. I'll start with welcoming all the participants, especially our esteemed panelists, speakers, and I'm expecting a lot of participants also to intervene. So all the interveners, participants, and the state senior officials from state governments, from cooperatives, from agri-tech startups, and our farmers who have joined. We will the agenda would be that we start with a presentation. मैं एक presentation दूंगा करीब 8-10 मिनट का. उसके बाद panelists or speakers would be requested to give a presentation of around 5 minutes. Less than 5 minutes will be appreciated. And then there would be some participants who would like to intervene. We'll give a chance to them, but the interveners would be requested to limit their suggestions within 3 minutes. Also, I would request all the panelists and speakers and even the interveners not to give details of their organizations, their details. The webinar is about Bharat Vistaar, which is India's AI-powered digital public infrastructure for agriculture, and we would expect the panelists and the speakers to give straight away come to the suggestions on and the PPT has been shared with the panelists and speakers. They know the last 2 slides had implementation challenges and the roadmap, the way forward. And there are certain questions that we leave to the participants at the end. We would expect that the participants and the speakers and the panelists and interveners focus on these questions and the implementation challenges and the roadmap ahead, so that we really make it a very impactful AI-powered digital public infrastructure for agriculture, with the participation, with the coordination of all the stakeholders, which is the state governments, the cooperatives, then ICR, and our scientists, experts, researchers, agri-techs, and overall our farmers. What is their expectation? How do we get their trust? That is all would be around this presentation. So we'll begin with my presentation first. I am Pramod Mehta. I am the moderator for this webinar. I'll give a short presentation now. Next. So this was the budget announcement, which also Secretary Sir mentioned in his presentation. Para number 83 of this year's financial year's union budget announcement was, and I read it verbatim quote, I propose to launch Bharat Vistaar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICR package on agricultural practices with the AI systems. This will enhance farm productivity, which means we have to focus on this, enable better decisions for farmers, which means farmers take informed decisions about everything that they do, from buying a seed to selling a produce, and reduce risk by providing customized advisory support. So finally, this the aim is that we give very specific customized advisories to farmers. How do we do that also? So very clear proposal on Bharat Vistaar, unquote. Next. Why is Bharat Vistaar needed in the first place? Is that because today everyone knows, and I won't take much time on this slide, there are fragmented digital ecosystems. We have had a lot of digital systems in the last 15-20 years since the digital
activities and the digital systems became more and more pronounced in the agriculture, in the government systems. And we had today have in multiple portals on schemes, mandis, weather advisories, even ICR advisories also in many places they are there. And last 3 4 years we have had AI tools also to help us understand what's going on, but they are all non-standardized. There is a high transaction cost for farmers because of this, because they have to go to various portals, go to various offices, find out their eligibility, find out what crops they need to grow. If there is a pest, what do I do? What is my benefit status? So they have to navigate through a lot of multiple portals. Then there is because of this, the access and inclusion gaps are there. We see that because of the language barriers itself, and because there are farmers who cannot read in English or read in Hindi or their language. So these farmers also need support through voice enabled systems. So then taking all of this together, we wanted to reimagine agricultural governance through AI and data, and that is why Bharat Vistaar was needed and was announced. Next. So what is Bharat Vistaar? How have we conceived it? We would obviously require a lot of suggestions from stakeholders. This is our perception. This is how we have conceived it. We would welcome suggestions on this. So like AgriStack, which we had was announced in Union Budget again, and we have developed AgriStack as a digital public infrastructure for agriculture. This one is an AI-powered digital public infrastructure for agriculture, which will integrate all the agricultural ecosystems, all the agricultural portals and systems. So this will be a single AI-powered digital gateway for all the farmers, and they can talk to, they can get their queries addressed, and anything that they want to know in their own language. And there will be multimodal AI-powered systems within the digital public infrastructure of Bharat Vistaar. It will have a federated architecture, which means there will be a AI-based interoperability. So it's easy to talk to other systems, other AI systems also. And then there will be an impact at scale, which means it is easily replicable, and states, cooperatives, etc., need not build their own systems again and again, because this is a system which can actually be taken and replicated, is what the intention is. And through our systems of agentic AI, the information will be given to the stakeholders, which is our farmers. Next. So these are the systems the systems that we have been talking about. What are these systems which are going to get integrated? In the first place, central government schemes, the state schemes and services, ICR, all that repository of knowledge, which is with ICR, the scientific knowledge on package of practices or cropping systems, all of it will be integrated in cooperative systems. For example, Amul has already launched an Amul AI, which will be integrated with this system. So we will have information from weather, IMD, from AgriStack for personalized advisories, for pest advisory from NPSS, government services, market prices from AgMarkNet, but we are open to integrating other systems also for improving our market intelligence from crop, livestock, and fishery advisories, wherever they are, will all be integrated with Bharat Vistaar. Next. So how is this Bharat Vistaar going to get, going to be used by farmers? इसके तीन रास्ते हैं. एक तो जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं अभी भी, वो है कि आप इसको डायल कर सकते हैं. 155261 वेरी शॉर्ट नंबर कैन बी डायल्ड, एंड एक AI assistant, agentic AI Bharati, will talk to the farmers and to the speaker and address the queries. एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है गूगल ऐप स्टोर पे, और बहुत ही जल्दी iOS पे भी आएगा. वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज दी Bharat Vistaar. And then Bharat Vistaar chatbot is available on web interfaces. So if you are going to the web portals or mobile apps of the Agriculture Ministry, you will actually find the icon there, which is on Bharat Vistaar. Click it and you'll get access to Bharat Vistaar. Next. So phase one version, which I would say is like a big pilot,
it's a between actually launching the scheme and a pilot. It's a big pilot of a phase one version which we have launched. So that is, if we do not do anything, then it is difficult to get the stakeholder suggestions, etc. So phase one version has already been launched with 10 major central schemes. These are the schemes I'll not read out, which include PM Kisan, PMABY, major ones: soil health, Kisan credit card, कृषि सिंचाई योजना, PM Asha for procurement of oilseeds, pulses, but PDMC, submission on agriculture mechanization, all these have been integrated. Next. So the phase one also provides benefit status on three major schemes, which is PM Kisan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, and the soil health card. It can the farmers can also register and track PM Kisan grievances. तो PM Kisan के कोई भी अगर grievances है तो उसमें किसान भाई बहन उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे ग्रीवांस पर क्या होगा। आईसीआर की जितनी साइंटिफिक नॉलेज है, क्रॉप्स की हो या पशुधन की हो या फिशरीज की हो, मत्स्य पालन के बारे में हो, साइंटिफिक नॉलेज वो सारी इससे इंटीग्रेट की गई है फेज वन वर्जन में। पेस्ट एंड डिजीज अलर्ट्स के लिए नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम यूज का व्यवहार किया जा रहा है और वेदर फोरकास्ट के लिए आईएमडी से इंटीग्रेट किया जा चुका है। मंडी प्राइजेस के लिए एग मार्क नेट से इंटीग्रेशन हो चुका है और इस समय फेज वन वर्जन दो भाषाओं में अवेलेबल है, विच इज हिंदी एंड इंग्लिश, but going forward we would like to integrate all the major regional languages. Next. So how the confidence that we got in developing such a system was that we have a strong digital foundation today in agriculture ecosystem. So AI is nothing without data. We all know about that. So this is the confidence that we get from this such data, that an AI system can easily be developed for enhancing the experience of the farmers. So AgriStack, we have more than 9 crore farmer IDs. Honorable Prime Minister also mentioned about that 30 crore land parcels, about that number have been digitized for crops, so grown data. And then we are also getting कृषि डीएसएस, वी हैव कृषि डीएसएस वेयर पार्सल लेवल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है कि आपका जो लैंड पार्सल है उस पर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के द्वारा आप कौन सी फसल उगा रहे हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, उसका सॉइल कंडीशन कैसा है, उसका मॉइस्चर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कृषि डीएसएस से मिलेंगी, जिससे एग्री स्टैक और कृषि डीएसएस को अगर मिला लें दोनों को, तो आपको पर्सनलाइज्ड या सेमी पर्सनलाइज्ड एडवाइजरीज देने में बहुत इजी रहेगा। इसलिए दोनों एग्रीस्टैक एंड कृषि डीएसएस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ एआई ड्रिवन एग्रीकल्चर systems, like we do today a crop identification through digital crop survey. We are using 100 years of IMD data for monsoon forecasting, which is very very important for our farmers. किसान ई मित्रा लॉन्च किया गया है जिसमें 93 लाख ग्रीवांसेस रिजॉल्व किए गए हैं। किसान ई मित्रा पीएम किसान के लिए लॉन्च किया गया था। अब किसान मित्र ई मित्रा के ही मॉडल को और डेवलप करके भारत विस्तार बनाया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमने एक बना रहे हैं, ये काफी बन चुके हैं या बन रहे हैं, जैसे फार्मर कॉमन एप्लीकेशन सिस्टम। अब हमारे पास एग्री स्टैक है और सारा डेटा है, तो हम एक ही जगह पर लाकर किसानों को उनकी जो भी आवेदन है स्कीम्स के लिए या सर्विसेज के लिए एक ही जगह पर वो आकर कर सकें, उसका एक सिस्टम बन रहा है। साथ ही पोर्टल जो है कि सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री के लिए, सीड्स के लिए, जिसमें सीड्स ट्रेस की जा सकती हैं। तो ब्रीडर सीड से लेकर वो सीड कौन से डीलर के पास अब है या कहाँ पर वो मुझे मिलेगी, किसान उससे पता कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम, पेस्टिसाइड का भी एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा, तो जहां से पेस्टिसाइड बने हैं और डीलर तक पहुंचे हैं वो इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगे, ये भी पता लगा पाएंगे किसान। नेक्स्ट। तो इस सब को यूज करके हमने इंटीग्रेट किया और आज भारत विस्तार फार्मर्स की 24/7 डिजिटल कंपेनियन के रूप में उभर कर आ रहा है। उसमें किसानों को ये फायदे होंगे, उनका जीवन आसान होगा, वो एक ही जगह पर आकर पता कर पाएंगे, उनके ट्रांजैक्शन टाइम बहुत कम हो जाएगा, उनकी ग्रीवांस रिड्रेसल भी बहुत फास्ट ट्रैक कर पाएंगे, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। या आप फसल ले लीजिए, पशुधन ले लीजिए, मत्स्य पालन ले लीजिए, क्लाइमेट एंड मार्केट रिस्क जो बढ़ रहे हैं उसका आपका मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में कौन सा क्रॉप और किस समय और वेदर रिस्क क्या है वो सब पता चल पाएंगी। प्रिसीजन एग्रीकल्चर को ये इनेबल करेगा।
तो आपका अगर आपके सेंसर्स लगे हुए हैं, आईओटी सेंसर्स लगे हुए हैं, आपका पॉली हाउस है, वहां पर अगर आपके डेटा है और जनरेट हो रहा है, तो उस डेटा को, एग्रीस्टैक डेटा को, कृषि डीएसएस डेटा को, सबको आप एक इंटीग्रेट करके एक इंटेलिजेंस जनरेट कर सकते हैं कि किस समय क्या करना है। इन्फॉर्म्ड रियल टाइम प्रोडक्टिविटी डिसीजन आप ले सकते हैं। सो इन चीजों से आसान ही नहीं होगा, सरल ही नहीं होगा जीवन किसान का, बट उसकी आय भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, आउटकम्स एक्सपेक्टेड। अब इस वेबिनार से ये आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए, आपके सजेशंस वेलकम है ऑन एक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ये हम जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस देखते हैं वो ये हैं कि पर्सनलाइज्ड एडवाइजरीज देने से पहले यूजिंग एग्रीस्टेक एंड कृषि डीएसएस में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से ये किया जाए, अपडेशन कैसे हो, साइंटिफिक पैकेज और प्रैक्टिसेस का कोई नई पद्धति आ गई है, कोई नया रिसर्च आया है तो वो इमीडिएटली उस सिस्टम में आ जाए। क्रॉपिंग सिस्टम्स जो है विभिन्न फसलों के, वो सारे आ जाए धीरे धीरे। इसमें एक आपका जो फोरकास्ट है, आज अगर मैं वेदर डेटा जानना चाहूँ, दिल्ली में हो या गुवाहाटी में हो या बेंगलोर में हो, मैं पता कर सकता हूँ, लेकिन फोरकास्ट, रियल फोरकास्ट, जैसे मानसून फोरकास्ट चाहिए किसानों को, वो कैसे आएगी? पेस्ट फोरकास्ट, तो पेस्ट का मैं फोटो लेकर आइडेंटिफाई तो कर सकता हूँ, उसका ईटीएल भी पता कर सकता हूँ, तो बट पेस्ट कितना हो सकता है आगामी 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, वो डिफरेंट पैरामेट्रिक डेटा को यूज करके एआई सॉल्यूशंस डेवलप करके वो पेस्ट फोरकास्ट कैसे की जाए। रियल टाइम मार्केट इंटेलिजेंस भी कैसे मिले किसानों को, जिससे कि मैं कहाँ बेच पाऊँ, कहाँ पर ज्यादा रेट है, कहाँ पर कम रेट है, मैं कितने दिन तक होल्ड करूँ, या कोई पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम, मैंने पोस्ट हार्वेस्ट इंटेलिजेंस मुझे चाहिए कि इसको अभी मैं बेचूं या ना बेचूं या रखूं, कितने दिन तक रखूं, ये सारे सिस्टम्स कैसे इसमें आए। स्टेट्स के इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट्स के अपने खुद के सर्विसेज होती हैं, उनके अलग तरीके के पैकेज और प्रैक्टिसेस भी कई बार होती हैं, अलग फसलों के लिए, पशुधन के लिए, मत्स्य पालन के लिए। वो सारी प्रैक्टिसेस कैसे यहाँ पर आएंगी, जिससे कि उस राज्य के किसानों को लाभ मिल सके और उनको सटीक उनके ही भाषा में, उनके ही राज्य की जो समस्या है उसको उस पर बेस करके उनको एडवाइजरीज कैसे मिल सके, इंफॉर्मेशन कैसे मिल सके, ये कैसे करें। और फार्मर जो इसको अडॉप्ट करें, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या हो इस भारत विस्तार को अडॉप्ट करने के लिए। एआई गवर्नेंस सेफ गार्ड्स बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल एआई, उसमें प्राइवेसी के इशू रहते हैं, सिक्योरिटी के इशू रहते हैं, ये कैसे बने जिससे कि ट्रस्ट डेवलप हो फार्मर का। एंड सजेशन ऑन मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसका इम्पैक्ट कैसे इवेलुएट हो, फीडबैक कैसे आए। नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड है, आई लीव दिस लास्ट स्लाइड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, पार्टिसिपेंट्स एंड एवरीवन। और किसान भाई बहनों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एआई एडवाइजरी जो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हो, किसानों के अनुरूप हो, वो एडवाइजरीज कैसे डेवलप की जाए, फार्मर्स का ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए, और जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस मैंने पहली स्लाइड में बताए उनको कैसे ग्रेजुअली नेविगेट किया जाए, और जो गवर्नेंस ओवरसाइट स्ट्रक्चर है वो कैसा हो। अभी हमने सोचा है कि भारत विस्तार स्टीयरिंग कमेटी एक होनी चाहिए, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज होनी चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी होने चाहिए, स्टेट्स में भी होने चाहिए, और जो जो सिस्टम इसमें जुड़े हैं उन सब की होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने सिस्टम्स को ठीक करते रहें। देखिए, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि डेटा कहाँ से आ रहा है। डेटा अगर रियल आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, ठीक आ रहा है, तो एआई सिस्टम भी उसको उसी तरह से किसानों तक पहुंचाएगा। तो बैकएंड पे जितने जितने इंटीग्रेट होते हैं डेटा, उनको और सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारा डेटा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके लिए उनकी अपनी खुद की कोई इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो जो कि 15 डेज में बैठे या आधा घंटा में बैठे, ये बहुत जरूरी बैकएंड डेटा में। और what should be the indicators to measure real impact? So some examples that we've given is कि स्कीम की क्वेरीज कितनी प्रोसेस हुई, ग्रीवांस कितने रजिस्टर हुए, कितने रिजॉल्व हुए, लैंग्वेजेस कितनी इंटीग्रेट हुई, स्टेट्स कितने इंटीग्रेट हुए, इसकी परफॉर्मेंस ऑडिट भी बीच बीच में हो सकती है, और फार्मर्स का फीडबैक भी लिया जा सकता है। तो आई लीव विद दिस ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर the consumption of the participants, and I would expect that all the participants and the speakers would focus on these questions and implementation challenges while making their suggestions. Thank you so much. Last slide है जिसमें कि हमने एक ईमेल आईडी दे रखी है, जो आप देखें बोर्ड में, us-it@gov.in। इस पे हम कोशिश करेंगे आज कि सबके पार्टिसिपेंट्स के जितने हो सके, हमारे पास टाइम लिमिट है 2:30 तक, जितने हो सके हम लेंगे,
बट जिनके हम नहीं ले पाए, कृपया करके इसको नोट कर लें, प्लीज नोट इट डाउन, us-it all in small @gov.in all in small, प्लीज नोट इट डाउन। इस पे अपने सुझाव, अपने सजेशंस जरूर भेजें, हम उनको कंपाइल करेंगे और उन पे एक्शन भी लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। I would now invite one by one the speakers that we have today. Some are physically present, others are virtually, they have joined. So I'll start first with Mr. Jagdish Babu. Mr. Jagdish Babu is the CEO of Extra Foundation, and he has been there. He comes with a strong background in digital public infrastructure and AI. He is driving AI-powered agriculture platforms also like Bharat Vistaar that you heard about. XStep has been behind it, and Mr. Jagdish Babu has been in the forefront. And he's also helping us in building Bharat Vistaar, and all that phase one version that we launched is due to his hard work and effort. We acknowledge that, and we would first start with Mr. Jagdish Babu. I would again reiterate, speakers have 5 minutes, and interveners, after that, we will request participants to also give their suggestion. They have 3 minutes, kindly. माइक वो वाला ऑफ कर दीजिए सर। हाँ ये Okay. दिस विल कैच। So first of all, thank you very much for the invitation, sir. So I'll take my time to first take through a brief idea of a DPI, which means in some sense, all the existing systems that have been very carefully developed with significant effort to put the right data behind it, the right systems behind it, to put all of those systems on a common rail, right? So the idea of that, what you say, the rail is to basically indicate that we are all on a common rail. That means we can connect the dots. If you go to the next slide, sir. So once we have these systems on rails, think about a visual like this, where like our true railway system, multiple stations, junctions, zones, all of that getting connected. Similar idea of various systems coming together, not just within, let's say, the Department of Agriculture, central department, state systems, cooperative systems, and later market systems coming together. All of them running on common rails provides for a very unified interface for farmers and the whole ecosystem around agriculture. That is the larger idea. I think is a very powerful vision, sir. I really compliment the department for launching it. You go to the next slide. From suggestions perspective, while I have a lot listed here, I will basically categorize it into three broad areas, sir. First, these systems are as useful as they are used, right? So I envisage there are many systems that are very useful, been innovated upon for almost a decade now. And such systems simplify it, bring it onto AI, and that should be available as the first one. And of course, in multiple languages and so on. That enough amount of data that exists among us be made available as a big idea. So whether that is market data, weather data, and so on and so forth. Today, we have to go across multiple systems. Many of them may not be trustworthy. That leads to poor decision making. The second big area, as also Honorable Prime Minister talked about, the connecting all the high value agriculture areas that there's being the latest focus, bring all of them together as a renewed focus area, because there's so much attention also being done on those areas, apart from the rest of the packages that is anyway being done, such as coconut, cashew, sandalwood, and so on, so that those new entrepreneurs, agri entrepreneurs, farmers who are trying to take up these ideas have enough information, because many of them may be refreshing their farms, are getting into this as a first time. They may need the maximum handholding. That could be a very phased approach to bring all of those into the system, sir. Finally, sir, as a DPI would, as also Honorable Prime Minister talked about, when you build upon it, there is value. That's where it grows. So in a phased manner, picking up the low value, low effort, high value systems, bring all those innovations onto it to start with, and then create a culture of innovating on the top, so that we can actually create significant research
to evolve newer ideas that eventually can get integrated for the benefit of farmers at scale after enough proof. I'll complete with that, sir. Thank you, sir. Great, thank you so much. Next, we have Professor Ganesh Ramakrishnan, who is the chair professor from IIT Bombay. And Professor Ramakrishnan is an institute chair professor at IIT Bombay, leading research in LLMs, generative AI, and data efficient ML. He also heads the India's national LLM initiatives under Bharat Gen. Over to you, Professor. So, one of our very important learnings in Bharajan has been a whole of nation, whole of government approach. We have to break silos across academia. I mean, we started with 7 academic consortium members, now 9, and DST, Ministry of Education, and India, I mentioned MIghty. We want to now make sure that we work closely with the Ministry of Agriculture for adaptation. The models, if you can, next slide, the models were also launched, several of them during the India mission by the Honorable PM. Can you go to the next slide? Next slide. So there's a very important virtuous cycle we need to create in this. We have depicted this. Data and diversity needs a lot of provenance. I mean, where the data came from, the entire process of data curation should be done in such a way that it's replicable. Because if you have garbage in, you'll just get garbage out, right? So provenance is very key here. The way databases, right? You query databases, you know the from the execution trace, from the query to what you retrieve. Then the other important part is the models that are built on this data need to be the operating system on which any research gets done. Research should be sandwiched between the models and partnerships and applications. We should not have research in silos. There is a need for research. That also has to be acknowledged. But this kind of ecosystem, at least at Bharajan, we realized that it makes research a lot more productive, and partnerships should be by design, which means you need to co-design, right? You need to co-design models, co-design even the research innovations. Next slide. um, there was a previous slide where we talked about specific recommendations based on our learning. So what we have realized is to make this happen at scale, you need to have integration of multiple sources of data. Can you go to the previous slide? I think that got missing here. Go to the previous. I think one slide before this. One slide before this. Sorry. So yeah. So this to be able to advance this, we need to have the multi-sensory input in one place. So this ties back to data provenance, both longitudinal data as well as fine-grained line department data that needs to be organized through a very extensive taxonomy. I'm sure the Mahavistar program has the built-in notion of taxonomy, but we need Bharat Vistaar. Bharat Vistaar has this built-in notion of taxonomy. Sorry, we've been interacting a little bit more with Mahavistar. And it's also important to ensure that the data curation process gets its feedback from model building as well. Because it shouldn't happen that we are creating data in a silo which is not getting used in the AI model building. I mean, it's intelligent ingestion, agentic orchestration, and sovereignty. Now, sovereignty, a very key element is participation. We need stakeholder participation from the word go, and it should be done meaningfully in the words of the principal scientific advisor. And this includes all the modalities, text, speech, and vision. In the next slide, we specifically give example of how a model design should be done in such a way that while it caters to all the languages, even in inference should be friendly. This is our param 2 architecture. We made everything open source. We try to make sure that the number of active parameters in a mixture of expert is small enough so that it can, first of all, be inferred with low resources. And the second important thing is design it so that it can handle code mixing. It can also handle multiple domains. Agriculture will never be only agriculture. You'll have insurance, you'll have legal issues. So that model design itself needs to have the DNA of the problem statement. The next slide, I just want to give one example of what
what I want to illustrate through the example is you need very close participation with ICAR. The farmers also, there must be a way by which you can pilot and get early feedback. Great. So thank you so much, Professor Ganesh Ramakrishnan ji. Now we move on to Mr. Alik Sharan, who is from Sarvam AI. Mr. Sharan leads the government and agent AI at Sarvam, and he's an alumnus of IIT Delhi and Chicago Booth School of Business. Alik is currently involved in making Gen AI deliver value to Indian government agencies, including us, central, state, and local governments also. Over to you, Mr. Alik. Sure. Thank you, sir. I will not cover a lot of the good points already made by our esteemed panelists, but build upon that. I think for us, first of all, thank you to the ministry for giving us this opportunity. Also, we've been, working on a few things on the G2C interface. So. It's okay. So we think AI can help in two primary domains in governance. One is the G2C interface, and the other is internal productivity. And how do you increase that? And everything falls in some sense in this framework. So what we have started with, and I think in an environment such as agriculture, where we need to make sure that solutions are tailored to individual farmers, their dialects, right, their cultures, it's very important to make that interface really good. So in that framework, how do you have systems that are able to understand them and also respond back to them in a way that is engaging becomes very important. Because if it's for example, if it's a robotic voice or something that sounds like a telecall, they may not even want to engage. So how do we get that early engagement? A few examples of that, and then we'll go to suggestions. One thing we've been doing under your leadership has been on the digital crop survey. So we called up farmers, 4.5 lakh farmers, and understood, what are the patterns from which, there might be some differences based on physical surveys, right? And how can we correct those patterns in various districts or understand, more broadly what is happening? And now we have also attempted calls to about 2 crore farmers under the same program and scaled it up. We've also been working with various state governments, on a variety of things. We can play one of the calls if possible. If you click on the person who's sharing. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बोल रही हूँ। यह फोन आपके प्लॉट्स पर हाल ही में किए गए डिजिटल क्रॉप सर्वे के सिलसिले में है। क्या मैं जी से बात कर रही हूँ? बजीतपुर में आपके प्लॉट 328 के लिए हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपने इस खरीफ सीजन में मूंगफली उगाया है। क्या ये जानकारी सही है? सही है। आपके बजीतपुर वाले प्लॉट 521 में हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपने इस खरीफ सीजन में उड़द उगाई है। क्या ये जानकारी सही है? हमने रिकॉर्ड किया है कि प्लॉट 521 में आपने मूंग उगाया है। बजीतपुर में आपके प्लॉट नंबर 459 के लिए हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपने इस खरीफ सीजन में मूंगफली उगाया है। क्या ये जानकारी सही है? सही है। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया मिस्टर। आपके फसलों का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। आपका दिन शुभ हो। So that is an example of what can be done at the G2C interfacer. But I think, there are so many other use cases, including advisory. We have been collaborating with many of the players on this table, including Xstep and others, to be able to do that. Now, as Professor also mentioned, very important to have models and a lot of data architecture and flows that are happening in this domain. So if we look at the approach then for Stack, it's from an AI perspective, we believe for the sovereign stack that we are talking about, we will need some kind of dedicated compute as well for all of these efforts. मी महाराष्ट्र शेती विभाग सरकारकडून धर्मदीप भिकारामजी राणे We can दिखाइए भाई। we can skip that. Now, where was I? So, lost my train of thought. Compute, yes. So we need dedicated compute for all the players to utilize to be able to inference these models.
Then on top of that, I think having a model garden is important, right? Various models for various purposes that can be used. Of course, India's made an amazing start with all of the sovereign models that we've just trained, and we should utilize them as soon as possible. In fact, for the sovereign model, we are aiming to get the weights out possibly today, tomorrow, so that anyone can use it. And we have been already using it for the calls that we are making right now for the DCS survey as well. But apart from the model gardens, what is really important is to have a virtuous cycle of data coming in. And I think previous panelists covered this in some detail. But the way the global models are becoming better and better is that they're getting the preference data from the people using these applications. So government can be a good, intermediary here that ensures the privacy and ensures the sanctity of that data while utilizing it to build better and better solutions for the farmers as time goes on. Right. So as we look at how they are using this, we should collect their feedback. In some sense, that becomes an evals pipeline. So as we collect their feedback, the accuracy of the system and how it has to improve, that can keep becoming better. And we'll need a strong data architecture at the back end. So not just an OL, you need to capture all of these transactions that will happen now at billion scale, but you also need OLAP databases to be able to analyze it. So both kinds of OLTP, OLAP databases having, a very strong data pipeline that connects all these agencies together and gets you the real-time data flow is important. Now that is the G2C interface, but on the internal productivity also, sir, we believe a lot can be done. With this rich data, we can understand where agricultural policy intervention should be targeted. And we've been working with Niti Aayog sir on that front on a platform where we are able to do policy analysis on curated government data. But one thing that can be done is with the data that is there in the ministry, how can we intuitively, internally, all the stakeholders at this table, at ICAR, can they understand from this rich data what are the actual issues on the ground, and where can we target the most impactful policy interventions? So that will be the next step, sir, apart from the G2C interface. And to enable that, all of these models will be important. Now, as rightly pointed out, we need a variety of models. So right now we have, as Sarvam launched 105 billion parameter model, which is also MOE, 30 billion parameter model, and even a edge model, a 3 billion parameter model, which we demonstrated to Honorable Prime Minister as well, which can even run on a feature phone. So that low resource component, sir, is very important. So I think, just very quickly point out that these are some examples of some of the key findings that came from DCS. This is an example where you can target, okay, that this district, these enumerators, we need to modify how they're collecting the survey in some detail. If we go to the next slide. Some of the other reflections are for us based on the data was voice is very important in this domain, and we got much better results with voice than with chat, right? Because of the number of people who we were able to connect to, and in this domain, a lot of people may have feature phones. So how do we continue improving that interface, expanding languages and dialects, as some of the panelists pointed out, and then beyond voice, we already talked about how to internally use that data for productivity and use AI to intuitively get insights. And I think, sir, you also covered the federated governance approach. So again, in this domain, bringing the states onto a common platform will really help, because we're working with various state governments. But again, everyone has their own siloed data pool, and we are trying to do things there. So as this stack comes up and we connect all the data together, the additional point that wanted to make, apart from what was covered earlier, is that virtuous loop has to be made. So as we connect the data, we connect it to the farmers. We need to get the data back in a way that the ministry should handle that data, and then we can build better and better models and infrastructure on top of that. So thank you so much. Thank you. Now we move on to Dr. Sheshakumar Goroshi from IMD. Dr. Roshi is an expert in agrometeorology with diverse work experience across fields such as climate change, forest meteorology, remote sensing, and agricultural insurance. So I would request Dr. Roshi to speak on predictive weather analytics for resilient farming using emerging tech. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for the opportunity. I'll be speaking about the predictive weather analytics for resilient agriculture. So, sir, we have already integrated IMD's weather forecast into Bharat Vistaar, so we are very happy. And can you please go to the next slide, please?
So just I'll be sharing my experience because I've been involved in providing this weather-based agro advisory to almost more than 5 crore farmers in the country, sir. So, sir, you have just integrated the panchayat level forecast for the next 10 days. So again, sir, I request actually, we are also providing the warnings in case if any warnings are there for the intense weather rain or extreme no, heat wave or cold wave condition, we just provide this extreme wave condition to those only specific districts. So based on that, our state governments or our AMFUs together issue one bulletin for heat wave and this likely impact of that condition and will be advisories. So that can also be integrated into it. So that will be again very useful for for policy makers as well as the farmers. Sir, again, IMD is implementing Grameen Krishi Mosam Seva, sir. So wherein we are providing the weather forecast for all the medium range for pest and disease forecast, now cast for immediate, events, hail nets and all, and long range weather forecast for strategic, planning for choosing the crops, varieties, and water management and all. So that could also be integrated into it for proper planning for next season crops and all. So again, sir, one more thing, what you mentioned is a very, challenging is that the dissemination part basically. So out of 11 crore farmers, so we could able to reach only 5 crores through the different channels, including the WhatsApp, sir. We have established almost 130 agrometeorological field units, sir, in 54 state agricultural universities, into IITs and ICR centers and NGOs as well, sir. And we have posted 2 dedicated scientists for this service only, specific service and disseminating our advisories as well as the weather forecast. Still, sir, we could only reach up to the less than 5 crore farmers, I would say 3 to 4 crores farmers through different channels, sir. Again, one more thing we could add into it is feedback actually. One feedback is end of the season. We collect all the feedbacks coming during that season regarding the weather forecast as well as the advisory what we are providing. And then what you can include is sub-season forecast. In case if any farmer wants to change anything reason to his specific reason within a season, immediately we can customize our advisory specific to his reason and his interested crop. That can also be integrated. That we're already doing it. So that can also be that model can be integrated in. And one more thing is, sir, what you said is Krishi DSS. We have already integrated many things to it. Any cyclone warnings are there, any short range weather forecast, anything is there. In case if you integrate advanced technologies like hyper local weather forecast with the uh, crop weather modeling, with the digital land records, can help, sir, actually generate a crop yield for their specific reason. It will help the farmers to generate yield before start the season and anything into it. So these are two, three my suggestions are this. You can integrate, sir, and I am ready will always be, happy to provide whatever support your Ministry of Agriculture required, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kuroshi. Now we move on to Mr. Swadeep Singh. He's the General Manager of Data Science on leveraging data from supported by AI coach for farmer-centric digital services. Mr. Singh leads the AI coach pillar and recently was part of the core team of AI Impact Summit, and he has also been recognized as one of the 40 under 40 data scientists by Analytics India magazine. So welcome to you, and over to you, Dr. Singh. Thank you, sir. So, sir, like when we talk about the Bharat Vistaar, so essentially for a farmer, like we need all the solutions to come together, whether it's the advisory or any problem which he had. And as we are just talking from the government perspective, we need to bring both the government and the private perspectives together. We need to bring both the government and the private perspective together because even private parties are creating a lot of good solutions, whether it is through products, whether it is through satellite imaging or other data sets. So when we actually talk about Bharat Vistaar as a national DPI for farmers, can we move to the next slide? So that's where like a lot of solutions with respect to sensor-based analysis, pest disease identification, drone-based surveillance, those are data, knowledge, and insights which have been developed by both the private and the public parties needs to come together through some API integration so that when farmer is assessing those knowledge and information, it is a one-stop shop for them. Can we just move to the next slide? And again, like as we try to look at the entire platform, three different things which we can try to solve.
One is empowering Kisan with the important information regarding schemes and other things. Second, when they're interacting with the government, it just doesn't have to be limited to the information. Say they have a crop insurance or anything. So involving those operation efficiencies for scheme operation, everything needs to be done. And third is like empowering them to take decisions like, okay, I have a say soil, I just put in a gyrometer, I take some insights, I just connect that into the Bharat Vistaar app, and I'm able to get a precision farming information, all this thing. So when we look at it as a complete DPI, all these things has to come together. And in order to bring this together, entire data sets needs to be coming together, both from number one, the development perspective of the AI, and second is the deployment or the inferencing of the API. Can you just move to the next slide, please? That's where, like, when we look at the AI Kosh or the Agri Kosh part within it, there's the government data sets which consist of scheme data, which consist of farmer registries, credit card data, soil data, and other things. But from the private perspective or the other parties, maybe when we talk about the other ministry, the rural data sets, the Jal Shakti data sets, they start coming in. The data sets which starts coming in from the private body. So they all need to come together to activate the entire platform, because that's where number one, the developments of new solution will happen, because right now we are limiting, or we have started with advising through the schemes data and other things. But when we want to go through very precision farmings, or through local language information, or even the local insights which may not be captured in the data through feedbacks and everything, those data needs to be captured from private or individual body, and may need to fed in first for the development of the AI perspective, and then for the inferencing perspective. Again, there is a good initiative. If you move to the next slide, there's good initiative where we have put more than 70 plus data sets at the Agri Kosh within the AI Kosh, which consists of all the different segments within the Ministry of Agriculture, which has come together at one place. So rather than it being silos in different departments right now, there are more than 15 departments who have contributed data sets. Again, some soil data, credit data, market data, weather data, all those data are there. But then increasing the richness in terms of multimodality, increasing those farmer generated data, increasing data from perspective of the important use cases, maybe the first step, and then increasing the use case, maybe the next step. So again, if you move to the next slide, just some of things which we should be immediately focusing is number one, curating more priority data sets, which may be multimodal in nature rather than just the scheme state and others. We start collecting data set from different users, say from startups or from agriculture itself, from private sectors, in terms of image data, voice data, so that people say, okay, I want to analyze through the video, or I want to analyze through the image of my crops, through the longitude, what happened in the last 3 days after the rainfall happened. So curating those priority data sets, making things accessible both from the data perspective and from the application perspective, which are coming from the different parties, and also trying to identify the use cases of the Kisan. Because right now we are sitting in a room asking some questions, trying to deal with some problem. They may have more problems which may be priority. So curating those use cases from the Kisan itself and then targeting those data and application may be the way to go forward to actually scale it up at a national level. Great. Thank you so much, Mr. Jay Mehta is the Managing Director, Amul. And they are the, obviously, I need not even tell the participants about Amul. Everyone knows about them. India's largest FMCG company with a turnover of USD 11 billion, representing 3.6 million milk producers across 18,600 village cooperatives. And within 35 years at Amul, Dr. Mehta has contributed to building the network, and I would the world's strongest dairy brand. So I would request Dr. Mehta to enlighten us on leveraging technology for resilient livestock and productivity. They've also recently launched Amul AI. We would also like to know about your experiences about launching it and the नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण पोस्ट बजट वेबिनार में जुड़े सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अमूल से साथ जुड़े 36 लाख किसान परिवारों को ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी से न तो सिर्फ अमूल के 36 लाख किसानों को जोड़ा,
पर उनके साथ जो 3 करोड़ गाय भैंस है, उनको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनकी सेवा करने का अवसर हमारे सभी किसानों को दिया। तो जैसे आप जानते हैं कि 8 जनवरी, इस साल के 8 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने इस एआई, अमूल एआई की लॉन्च के बारे में प्रेरणा दी और 11 फरवरी को हमारे मुख्यमंत्री श्री ने इसका लॉन्च किया और 19 फरवरी को जो एआई समिट हुई दिल्ली में, जिसमें विश्व के 35 हेड ऑफ स्टेट्स के सामने इसका हमने प्रदर्शन किया और उनकी सराहना भी इस इम्पोर्टेंट जो एआई टूल है उसको मिली। तो टेक्नोलॉजी का जो बात की, टेक्नोलॉजी का कल्चर डेवलप करने की, आज सुबह ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हम इसको कैसे गुजरात के 18,600 गांव में सभी किसानों तक इसको पहुंचा पाए हैं। तो भारत विस्तार के माध्यम से ये हुआ, एक स्टेप फाउंडेशन के सपोर्ट से बहुत ही कम समय में ये 24/7 डिजिटल असिस्टेंस सरलाबेन के नाम पे नॉर्मल फीचर फोन के माध्यम से हम अपने किसानों तक ये कोई भी पशुपालन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। पर इसके पीछे जो डेटा और नॉलेज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने आगे भी सभी एक्सपर्ट्स को सुना, वो कैसे हमने इसको इस्तेमाल करके इसमें डाला। तो अभी अगर हमारे 36 लाख किसान परिवार दिन में 2 बार दूध देते हैं तो एक साल में उसके करीबन 200 करोड़ ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं कि कितना दूध आया, कितनी फैट आई, कितना एसएनएफ आया, कितना दाम मिला, गाय का दूध था, भैंस का दूध था, वो रिकॉर्ड्स थे। साथ में जो हमारे कैटल रजिस्टर्ड है उसका हर 5 साल में हम सेंसस करते हैं। जैसे हम मनुष्यों के आधार नंबर हैं, कैटल के भी डिजिटल टैग नंबर है और वो सबको हमने इंटीग्रेट करके साथ में जो ट्रीटमेंट होती है वेटरनरी, उसको भी हेल्थ रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट किया और जो बाकी जो सर्विसेज हम कैटल को और गांव में किसानों को देते हैं वो सबको इंटीग्रेट करके जो नॉलेज बेस था वो भी इसके साथ प्रोवाइड किया, फीडिंग का, ब्रीडिंग का, वेटरनरी सर्विसेज का, ताकि किसी भी किसान को गुजराती में प्रश्न पूछने हैं तो उसके बहुत सरलता से सरलाबेन आंसर देती है और उसकी वजह से वो अपनी गाय भैंसों का ध्यान अच्छी तरह से रख पाती है, उसको फीडिंग, ब्रीडिंग, बाकी न्यूट्रिशन, हेल्थ, सभी स्कीम्स का फायदा मिलता है। ट्रांजैक्शन जो होते हैं मंथली के साथ उसका भी रिकॉर्ड्स होता है, सरकार की जो स्कीम्स है उसकी भी डिटेल्स मिलती हैं और भी जो सभी सहकारिता के माध्यम से उसको लोगों को जोड़ना है उसका भी नॉलेज मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आय बढ़ानी है किसानों की तो इसमें भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो अमूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सरलाबेन के माध्यम से हम सभी किसानों तक अभी गुजरात में पहुंचे हैं और गुजरात के बाहर भी किसी भी भाषा में इसको करना है तो इसको हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, उतना मुझे विश्वास है। तो इस इस अवसर पर सबसे हम अभिवादन करना चाहेंगे, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी ना तो सिर्फ किसान तक पर उनके मवेशियों तक पहुंचा पाए हैं। जैसे सुबह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है, विश्व का 25% दूध का हिस्सा भारत में हो रहा है, अगले 10 साल में वो 33% हो जाएगा। भारत को डेयरी टू द वर्ल्ड बनना है। उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और माइंडसेट डेवलप करने की भी जो बात की, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और किसानों के सहयोग से ये हम बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, उतना मुझे विश्वास है। थैंक यू सो मच। ऑपरेशन की भी कामना करते हैं। एक अच्छा इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाए भारत विस्तार के साथ मिलके। कोऑपरेटिव सिस्टम्स का एक ये अच्छा उदाहरण है और सारे कोऑपरेटिव सिस्टम्स को भी हम जोड़ना चाहेंगे जैसे अमूल है। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मूव ऑन टू मिस्टर भास्कर नटराजन। ही इज द चेयरमैन एग्री वॉच मार्केट इंटेलिजेंस जो देखते हैं और डॉक्टर नटराजन हैज over 30 years of consulting experience and he spent years specializing in agri-commodity market intelligence. He has also worked as a technology consultant with Computer Science Corporation in the USA, contributing to IT projects for several Fortune 500 companies. He will be speaking to us on using AI for real-time price discovery and trend analysis, which is a very, very important component we are looking out for Bharat Vistaar. Over to you, Mr. Natraj. So, first of all, thank you everyone, and very privileged to be as part of this panel. I do not have a presentation, but I have very few points to make. My focus is only on price forecasting and price discovery.
and where AI can be used in these areas. So I'll talk first about price forecasting. How do you forecast commodity prices, agri commodity prices? At the end of the day, it is all about supply and demand, right? So more the supply, lower the price, higher the demand, higher the price, so on. Very basic economics, but it needs to be broken down into its components. So we use and any company uses three main methods for price forecasting. One is called fundamental analysis, second is technical analysis, and third is econometric analysis. So fundamental analysis is the study of supply and demand, where supply is broken into its components. In the context of agriculture, it is stocks carried in from the previous year, production this year, and imports, if any. These constitute supply, and demand is what is consumed domestically, including its subcomponents, in sector-wise consumptions, and what is exported. And what is left is carried into the next year in the context of agriculture commodities. So this balance sheet analysis is one of the methods which is our bread and butter method of analyzing markets. The second is technical analysis, and anybody who has watched CNBC or Economic ET Now or such channels knows that in the morning all these technical analysts say, and this is the support level, this is the resistance level. At the heart of it is the principle that everything that is to be known about the market is already reflected in the prices of that thing, that item in the market. So you don't need to know what is supply, what is demand. If you study the prices, you know what you can make a reasonable guess about the future of prices. And the third method is econometric, of course. So that includes univariate and multivariate models of price forecasting. So now AI has entered into this equation, and it has the ability to go beyond all these three methods, not only incorporate these three methods, but go beyond it. So, and why is that? Because AI works very well with large data sets and unstructured data sets. It is able to fill in gaps where there is missing data. Second, it is able to find hidden patterns and correlations between various data points. For example, when we analyze pulses markets, we know that in the summer, when the mango season is there, demand of dals goes down. Now, can we use AI to figure out more such patterns which is not obvious to the human? So this is one application of AI that I can suggest. Third is AI can go down to very local levels. So when we do price forecasting, it is usually at the national level. But you can use AI to go down to very local, small, village level or the mandi level, at the first mandi level. Fourthly, we can use AI to nudge farmers into better crop selection. Because right now, farmers are mainly crop price takers and not, they don't have any bargaining power. So with AI advisories that we are developing in Bharat Vistaar, this could be one of the components to nudge them into better crop selection. Because once the farmer is committed by sowing, he has no choice until the harvest. So can he make better crop selection before sowing? And the last area I thought that AI can be used is to develop early warning systems with access to all the data under AgriStack. There is potential to develop early warning systems not only for policymakers but also farmers. So before there is any commitment on sowing, can we issue
warnings or alerts to various stakeholders. So these were my points on uh, price forecasting and applications of AI. Thank you very much. education and also postgraduate teaching. So over to you, Dr. Burman. He'll be speaking on harnessing emerging tech and AI for extension services. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. May I have the slides, please? Or Dr. Burman, shall I share, Dr. Burman, share, sir, from my end? 5 minutes. Okay. You'll have 5 minutes. I see your PPT to be very large. Yes, sir. I would like to curtail and restrict to my presentation in 5 minutes. Thank you, sir, and good afternoon, everyone. The topic is harnessing emerging technology and AI for extension services, and today we are talking about Bharat Vistaar. So I'd like to discuss our Kisan Sarthi, which is a portal of ICR, how it can be integrated with Bharat Vistaar. We have seen a very significant digital infrastructure growth in India over a period of time, and that encourages us to think of AI-based digital extension delivery services to the farmers. Next, please. So Kisan Sarthi, as I was talking about, it is operational for last many years, and we are providing technology-based agro advisories, customized agro advisories to the farmers in 14 languages, and 90% of the districts are covered, 85% of blocks, and about 45% villages, and 2.75 crore farmers are connected and registered on Kisan Sarthi portal. And we have a strength of about 4,000 experts of KVKs and ICR institutes. And it is a multi-channel access. Previously, Kisan Sarthi used to be standalone, but then Kisan Call Center is merged with Kisan Sarthi, and then Kisan Sarthi has farmer mobile app and direct expert consultations, text, audio, video advisories, video call scheduling, WhatsApp and digital integration, and Bhashini enabled translation. Of late, we have also developed agriculture advisory management system that our moderator sir was talking about, updation of package of practices. So this agricultural advisory management system is updated on a real-time basis. And we have also interface of discussion forum and large language modeling chatbot and AI-based biotic and abiotic stress detection facilities in Kisan Sarthi. Next, please. This is the infrastructure and it is architecture. So the Kisan Sarthi cloud is the main backbone, and which is supported by agricultural advisory management system. And the Kisan Call Center, AgriStack registries, and IMD and other public platforms are integrated through API integration. And we have a good number of experts, and also there are AI and ML based decision support system and chatbots for providing alerts and notification to the farmers. Next, please. So this is the agriculture advisory knowledge management system I was talking about, which is supported by ICR, State Agriculture University, Central Agriculture University, and KVKs, which is validated, and the content is published, which is further customized and localized by the KVKs to suit to the local situation. Next, please. So through Kisan Sarthi, we are providing weather information and forecast, mainly with the integration of IMD support. And also it is a translation and transliteration support is provided in 13 languages, text to speech and vice versa. Then there is a facility of one-to-one video calling and also one-to-many, so that we can conduct online meetings with a particular group of farmers of a particular district or maybe a state or a couple of states. And Kisan Sarthi apps also provide multimedia communications. Then Kisan Sarthi Post, there is advisory management system which can definitely support Bharat Vistaar. Next, please. And chatbot, I will not discuss much about.
but there is another chatbot application in Bharat Vistaar, so both can be integrated. Next, please. So this is the Kisan Sarthi 2.0. We have a three-tier calling system where level 1 Kisan call center, it lands to the particular call center where most of the queries are advised based on the agriculture advisory management system. If it is not answered at that level, then it goes to level 2 where the KVK experts are the level 2 experts. And if it is not answered at that level and we need very specialized information, then it goes to the ICR institutes and universities from where it is answered. Next, please. So we have a three interface through which the farmers can connect to the Kisan Sarthi, either through Kisan call center with a toll-free number, or it's a common service center. They can go to a common service center, raise a query and schedule a call. Monday, Wednesday and Friday, 1 hour we have a dedicated. So there will be a 6 minutes slot for each call. So 10 calls every alternate day it can be scheduled. And if the KVK staff is overworked or not is full during that 1 hour time, then the nearest KVK expert can also be call can be scheduled the way we schedule a call while taking appointment of doctors. And there is a third through app, which is Kisan Sarthi mobile app. We have two interface. One is for extension professionals, another is for farmers. Both apps are available on Google Play Store and as well as iOS, and also through Umang platform, it can be downloaded. So it goes to the KVK expert, where KVK experts provides the localized and customized knowledge, which is the content is created, which gets support from the agriculture advisory management system. And if it is not answered, it goes to the third level. And these are the interface through which the query answered to the farmers. One is through SMS on the registered mobile number. One is through printed prescription from the common service centers, where the BLE can take a printout and give it to the farmers, or it can also show in Kisan Sarthi farmer app under My Queries section, and it can be downloaded from Kisan Sarthi web interface as well as WhatsApp. It can be printed. So with this, there are three challenges that was mentioned by our esteemed moderator regarding personalized advisory. So since we are connected with AgriStack, and when we can get connected with the crop registry, soil registry and farmer registry, we will have a better background picture of the farmer. And whenever the query is raised, so we will get those information on the dashboard, which is a supplementary information. And based on that, the curated and localized real-time advisory can be given to the particular farmers. Our package of practices are getting updated, where all the ICR institutes and state agricultural universities, whenever there are some updation, they keep on adding in agriculture advisory management system. And AI-based weather and pest forecast, we generally get support from NPSS. So those can be integrated. And with this, I think Kisan Sarthi and Vistaar can be merged together and provide a good customized agro advisory. The merger, there is already a committee is constituted and which is looking after the integration. So with this, I'd like to thank organizer, and I would like to end my presentation. Next, please. With a quote of our Honorable Prime Minister that we must ensure the technology is accessible, affordable, and adds value. Thank you. Thank you, Dr. Burman. Thank you so much. It was very insightful. Now we move on to Shri Parimal Singh Ji, who is the project director for Pokra. He is an IS officer of the 2004 batch Maharashtra cadre with a strong academic background in economics from St. Xavier's College in JNU Delhi. He is currently serving as project director for Pokra that I just mentioned, and which leads climate resilient agriculture initiatives in Maharashtra. Parimal Singh Ji would be speaking on scaling AI in state agriculture, strategic lessons from Maharashtra's early adoption. Over to you, Parimal Ji. So thank you. Am I audible? I hope. Hello. Am I audible? You're audible very much. Thank you, sir. So thank you, everybody. Sir, we have been in Maharashtra working around an AI agriculture policy with a number of pillars.
and a number of products which have been which have arisen out of this strategy have been rolled out over the past 1 year. Last May, we rolled out the Mahavistar platform, which is an AI-enabled platform for giving advisories to the farmers. Maha Agri Data Exchange has been formed for data exchange across the university and departmental ecosystems. And of course, we are going to provide a sandbox along it for kickstarting public innovation. Recently, we have also, with the help of IITB, developed an AI-enabled pest and disease image system and AI-enabled telephony system called Vasudha. And also, we have incorporated the Bhili language into the Mahavistar. This is going forward, we'll be able to, hopefully over the next 5 to 6 months, integrate at least 10 important Adivasi languages across Maharashtra. We have got almost 1 crore speakers of Adivasi languages within Maharashtra. So the entire, I would not dwell a lot on Mahavistar per se, but the entire learning that is around this is the fact that the farmer is looking at single window interfaces. The farmer is desperately looking for credible and validated knowledge and trying to sift out a lot of knowledge and bases that are available across the spectrum. The farmer is, of course, looking for solutions in local languages. On the extension side, and I think that is very, very important, that for anything that we deliver as far as advisory systems or decision support systems, the extension side cannot be ignored. For the extension agents, it is not physically possible to reach a large number of farmers. Also, there is a lack of confidence because agriculture knowledge is an ocean and people need to be supported in this. And around it, the concept of personas. So personas is something where the Mahavistar platform or the Bharat Vistaar platform should appear different to different people, should deliver different services to different people. For my Krishi Tai or for my extension agent, Mahavistar should look different. For the dairy farmer, it has to provide different services. It should look different. For the woman farmer, it should be different, and for the male farmer, it should be different. So understanding what the persona actually needs becomes a very, very relevant context. Dissemination pipelines are what we all are building, and therefore dissemination pipelines become exceptionally important. It is not enough now merely to hoist information on portals and platforms. This won't do. Earlier, we were doing a lot of that. I think that is changing, and that's a very, very good sign. But then understanding what has to be disseminated through what pipeline, what is the modality within a multimodal platform, when do we trigger an SMS, when do we trigger a telephone call, when do we trigger a two-way telephone call, and when do we trigger a one-way telephone call becomes exceptionally relevant. Around all this, whenever we do this, we have to also understand that why should the government be doing it? And this is a context which always arises. And one of the most significant issues is that while others might be providing these services, if public research institutions have to remain relevant, the feedback loop which arises out of such an exchange through Mahavistar, through Bharat Vistaar, etc., and the analytics layer around it, lets public research become relevant. And therefore, this is something, and I think some of the speakers have already mentioned that we have to ensure a lot of consent-based mechanisms around this to gather data and try to pull it back into public research systems. So the humans in the loop are very, very important, especially in the building stages. This is something which we have worked at, but as more and more feedback will start coming in, we will also have to start resorting to maybe LLMs as judges to try to understand whether the correct response was given, what was the accurate response, what went wrong, and then try to check in with the humans to understand how do we try to frame better responses. Because let us be very, very frank, errors will happen, misunderstanding of the dialect will happen, sometimes wrong answers will flow through AI. So we have to be both cautious and at the same time a bit forgiving of the mistakes that will happen around it. I think multimodality becomes absolutely important. We started off with text. We realized that not everybody will come to seek text answers. So the Vasudha telephony pilot was rolled out. Now it's going to be rolled out across the state.
And we also said that not everybody will come to seek information. I think push telephony, trying to supply people with answers across the board so that farmers also have a feeling, yes, the government cares, it is reaching out with relevant information to me. So we have also started a pilot of push telephony, which we hope to soon cover with all the 1.5 crore farmers of Maharashtra. Low resource languages becomes absolutely relevant because uh, we have always, I think the entire AI world has always said that, look, as far as languages are concerned, we should first talk about those languages which have high resource content, and then we will slowly move towards low resource languages. I think we have to give equal attention right from the start to low resource languages, Adivasi languages, other languages. Then it becomes relevant. Let us not wait for 2 or 3 years and say, let us start working about low resource languages later. I think two things which are absolutely necessary is the fact that because the farmer needs relevant advisories and not the advisories we necessarily want to offer. So first is understanding what does the farmer need specifically. Secondly, we have to move towards the farm level understanding of what the farmer needs. And two things become very relevant here: early identification of crops and better hyperlocal weather prediction. And so when we talk about early identification of crops, probably reaching out, as some of us are trying to do, reaching out to the farmer right in the beginning of the season and asking, what are you growing? And I don't think it needs to be verified, because this is only for certain services. These are advisory services. And so let us take what the farmer is saying as the truth, and accordingly we should be able to give him or her the advisories. Better hyper local weather prediction. Right now, even Mausamgram, I suppose, is at a 6.5 into 6.5 kilometer grid. Let us try to get onto a 2x2 kilometer grid. If that happens as we move along it, as soon as it is possible, suddenly the entire advisory frame will change significantly. Pest and disease advisories, other advisories, irrigation advisories will become absolutely relevant to the farmers, and we'll go on to the next stage. This much I had to tell. Thank you so much. Thanks a lot. Very good suggestions, Parimalji. Now we move on to Shri Kunj Bihari Dagaji. He is the Chief Architect at MSC's Center for Responsible Technology. He's joined with us remotely. He has experience in building large-scale mission-critical digital systems, and he brings deep expertise in digital public infrastructure, enterprise architecture, trusted data sharing ecosystems. What do you, Kunj Bihari? Yeah, thank you, sir. Thank you for this opportunity. I hope I'm audible. You are very much. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thanks. And the great thoughts by previous speakers, sir. So I'll talk a bit about the Bihar Krishi platform and how Bihar has leapfrogged from the digital systems to now more thinking on the AI-led transformation. So, sir, in Bihar, as part of the Bihar government's initiative to enable and empower the 12 million farmers of Bihar, there's a platform called Bihar Krishi, which was launched. The entire thought process of building this platform was more from the farmer-centric centricity perspective. So what this platform does is it brings in multiple services, farmer-facing services together in terms of government schemes, advisories, input services, market linkages, and so on, including the grievance redressal. And it is accessible in multiple modalities or channels, including mobile applications, web, assisted channels, and voice-based interfaces now. Bihar has now gradually started adopting AI, artificial intelligence, in a practical way. So the first important milestone was the launch of AI-powered chatbot through the Bharat Vistaar initiative. And this chatbot is helping now farmers with accessing the best practices in the farming and getting the guidance with very simple to use, user-friendly interface in their local languages. And sir, AI can be a great equalizer for these small and marginal farmers, which constitutes the larger farmer base in Bihar, in terms of having the information more accessible and easy to understand and in their own local languages. So it is more important for focus on the larger adoption for these farmers by bringing in more farmer-facing services by using AI.
As I just mentioned, sir, Bihar Krishi platform has provided a strong foundation in terms of bringing the basic services to the farmer, which are largely government and government-led services. But if we see the next opportunity lies in extending or expanding the partnership with the agri-techs and bringing the innovation, as Honorable PM also mentioned, about like how we can enable those innovators to bring in these solutions for the farmer. So that would be the next kind of a leap that all the state governments, including Bihar, have to take. So these platforms, what are built, like the platforms like Mahavistar and Bihar Krishi, these provide the strong foundation in terms of the enabling layer for these innovations to happen. And the agri-tech companies and private sector innovators can bring new solutions for the farmer, which can provide maybe tailored recommendation based on their crop type, their crop stage, the conditions of the soil, and climate patterns and preferences of the farmer, and so on. So, so to enable this ecosystem, of course, the most important part is what the previous speaker Parimalji mentioned, right? Like how do we ensure the safeguards and guardrails around it, like how the data can be shared in a consented manner and so on. So that is an important part that has to be taken care. But it is very important to unlock this innovation ecosystem. And the objective of this innovators would be to maybe how we can improve the quality of advisory provided to the farmer, that too in a timely manner. So that from the climate shocks and from the unpredictable weather patterns and the price movement in the markets and all, we can provide these layer of support to the farmer. And that's how the farmers will have a better trust in the digital technology if it is more contextual and to their need. So just to summarize, sir, like just a few of the recommendations that I would want to make. So one is the availability of the AI infrastructure in form of GPUs for the state governments and all other institutions, right, who are trying to build the solutions and farmer-facing solutions and all, so that they can better work with data and models and improve their services. The second is working. The multiple agencies have to come together to create the enriched data repository in form of image repository, the language repository, the vocabulary of agriculture, as because it varies from region to region, and also in terms of the advisories that universities and these all other institutions have been doing for a very long time. So how we can create these enriched data repository, which can then be used or which can be opened up in the ecosystem for them to train their models better, and which can be more contextual for the farmers. The third is bringing these ecosystem, maybe some incentive mechanism or some way that these can come with those innovative solutions, and which can come at a fractional cost for the farmer, or like a almost zero cost to the farmer, so that they can leverage better all of these services. And also, one of the points that the previous speaker mentioned is also the key one, because a lot of farmers still do not have access to smartphones and means like that. So how can we empower the extension staff, including the Krishi Salakars, with better AI solutions, so that the advisories that they are giving to the farmers are more contextual and based on the real-time availability of the information from the weather and other perspectives. So thank you for this opportunity, sir. I'll just stop here. Thank you so much, Hon'ble ji. Now we move on to our Chief Knowledge Officer in the Ministry of Agriculture, Shri Rajiv Chawla ji, who's also our advisor for AgriStack and the digital public infrastructure. He doesn't need any introduction, but still, for the sake of other participants, I would like to mention that Sri Chawla ji belongs to Karnataka cadre 87 batch. He's an alumnus of IIT Kanpur with a BTech in electrical engineering. He's best known for leading the landmark Bhumi initiative, digitizing Karnataka's land records over 14 years from 1998 to 2012. He was awarded the Prime Minister's Award for Excellence twice, first for Bhumi initiative and again for digitizing over 700 services under Seva Sindhu. Currently, he's, obviously I mentioned earlier, as advisor and chief knowledge officer in the Ministry of Agriculture, leading the implementation of AgriStack. Over to you, sir. Thanks, Pramod. I have two slides to speak.
We spoke about uh, giving services through Vistaar type of a platform using AI. We also spoke about LLM. Sarvam spoke about LLM, others spoke. And we realized that we require data. And I would speak about while most of the people know about it, I would still take a couple of minutes to explain what is AgriStack and then uh, what are the guardrails required when we use this data. So just to tell everybody that more than 9 crore farmers are enrolled into, and they're all given farmer ID, which is a functional ID, as Aadhaar cannot be used as a functional ID. These 9 crore farmers include forest dwellers, those who have been given land in the forest area, and they also include tenants. We hope that we'll get in coming years at least 4-5 crore tenants. It'll of course depend upon the state, but probably 15 to 20 crore uh, number of farmers and cultivators, etc., would finally come into the system. We today know about 50 crore land parcels where they are located. Their polygon coordinates are known, and therefore it should be possible for us whenever we use this data, we can use the spatial part of this data because we have to mix and match with satellite information, weather information, when you want to do something on hyperlocal scale. All these details are part of a second registry called the Georeference Map Registry. And the third is the authorized true source of what is a crop grown on each plot. This, of course, is vetted to 6 lakh people who go to each village, one person to one village, and pick up these plots. Approximately 30 crore plots are picked up. And we expect that in coming days, with West Bengal joining and crop survey finishing everywhere, we'll have nearly 50 crore parcels. Of course, today we do crop survey at the survey number level. That means if there are multiple owners, we still don't do at a owner level, but it's a matter of time. And then, of course, we'll have much more data. So next slide. Now, we all can now easily realize that AgriStack is like Aadhaar Plus for the agriculture sector. Given a person, you know his fingerprint and his some demographic information. Here, given a farmer ID or Aadhaar, you know his land, where are his lands, and what are the crops grown. And then, of course, once you feed this farmer ID into different systems, how many animals are there, what are the fisheries there, what is the type of a soil there, all that will be known. And for that purpose, like Aadhaar has their APIs, the AgriStack has what is called UFSI, Unified Farmer Service Interface. So having said this, it is extremely important that any system, be it Vistaar or any system which uses this data, and of course the private sector, as the Prime Minister spoke in the morning today, they should use it with utmost care. We should not kill the golden hen itself, the hen which gives the eggs. We have to protect that. And therefore, the ministry has come up with data sharing guidelines as to how this draft guidelines are available on AgriStack website. The draft guidelines have been sent to all the states, and I'm sure that in next 1 month, the final guidelines will be issued. It is extremely important that any data consumer should keep this in mind. All the state governments who provide the data, who are the data producers in a way, what is called AIP, AgriStack Information Provider,
and AIU, the information user, the user will have to use the data keeping in mind these guidelines. And of course, the data, as somebody was speaking, will have to be given with the consent of the farmer. Now, even if farmer gives the data with the consent, the data has to be kept in the consuming system for minimal amount of time. Why I am stressing on this is that while this is very exciting data, this data has to survive. The system has to survive. And therefore, we will have to be very, very careful that any system which uses this data or any state which provides this data to any system should ensure that the data is not misused so that the data survives, the confidence of the farmers continue. Finally, while AI-based systems, government is coming with Vistaar, private sectors are coming with their system, it is extremely important that anything we do on specific farmer and especially advisory, we need to be very careful. Uh, of course, from a data point of view, data should not be misused is one part of the story. But if we are giving advisory, a human in the loop in the beginning would be a good idea so that we don't make mistakes. The farmer should not lose. Farmer should not lose his crop. The models are to be tested. There has to be some type of regulatory sandboxes, etc., where we should do the sandboxing before we give advisories on the basis of which the farmer acts on those. Otherwise, they will. If some of them lose money, that may give a bad impression. But I'm sure all these things will be taken care of. Thanks, Pramod. Thank you so much. Now we will open out the session to the participants. We have a list of interveners who would like to speak on the subject matter. I would call them one by one. We have a list here who have immense interest in making the intervention. I would just request them to kindly limit your suggestions to 3 minutes because most of these things have been spoken. So if there are new things or any unique thing that you would like to tell us or to note regarding the implementation challenges of Bharat Vistaar or the roadmap on implementing Bharat Vistaar, kindly do so. So we have first intervener is Miss Shivali Krishnan. She is the Deputy Director, Gates Foundation. Over to you. Thank you so much. And first of all, I think this is a huge moment of pride for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare to really look at in terms of how the whole painstaking work around the last 3 years. And I see many familiar faces from Rajiv ji to the secretary in Bihar, Assam, in Maharashtra, Parimal ji, as well as JB and others sitting in the room. It is a very opportune moment, particularly to look at how Bharat Vistaar can be the change that can really transform the agriculture advisory ecosystem, both agriculture as well as livestock advisory system. As the Honorable Prime Minister announced in this morning, particularly in terms of how this is an integrating agri-stack, the whole ICR data to deliver hyper-local, multilingual advisories to over 140 million farmers in India. I just wanted to share a couple of things which I see already were highlighted with JB's presentation. But when we talk about Bharat Vistaar to empower farmers, one of the things that we should be also looking at is how do we stress on voice first query via simple calls or some of the internet-based calling systems that in local dialects, so that we are able to both look at accessing more and more farmers use this interface, but also how the yield responses are under 30 seconds. And I think in the age of very rapid responses, we should be really looking at yielding responses in under 30 seconds. That would enable more and more people access Bharat Vistaar much more in ease. The
This also allows for a shift from a top-down generic advice to farmer-led real-time insights on crop, weather, livestock, pests, and schemes. But it also amplifies the marginalized voices, especially women, smallholder, tenant farmers, through accessible speech-based interaction. So that would be one area I would say that we need to be looking at. We can look at Indian organizations, indigenous companies who can come up with much more faster development of this voice first query through simple calls. The second aspect is that in terms of multilingual reach from Hindi to regional language, ensuring that we are not leaving any farmer behind linguistically. And this is where if we can really use AI to translate complex ICR practices to everyday language. One is the use of colloquial language, but also what is spoken in a dialect or a daily manner. It becomes extremely important that we are not just using that language, but also ensuring that advances in agriculture, in technology, in innovation is actually also reaching the diverse regions of the country, including the northeastern region, where hyperlocal language layer builds trust, but also speeds decision making and timely alerts of including sowing tips, pest alert, weather, and so on. Finally, as Rajiv ji mentioned that, when we talk about some of the agri-stack data and the soil health data, rainfall forecasts, crop cycles, real-time integration with tools like Mosam GPT provides early warning for droughts, floods, and others. We are talking about transforming from reactive farming to proactive resilience. And when we talk about from reactive farming to proactive resilience, it means that we are cutting losses as well as optimizing the inputs for water, fertilizer, seed, and so on. This requires clear guardrails, prioritizing a farmer-first design. AI draws solely from what we have to ensure that it solely draws from really vetted content that is coming from reliable sources, whether it is validated ICAR, State Agriculture University, or in terms of private sector practices that are vetted, and making sure that the agri-stack sources and all of them, they are providing more reliable as well as genuinely acceptable sources. This guardrail will actually help in terms of building an open, federated infrastructure so that there is no lock-in required, but also privacy safeguards that will be required for farmer data. I'm sure with the Ministry of Agriculture taking leadership, the oversight ensures equitable access, ethical use of AI, as well as continuous refinement based on technological development so that we do not have vendor lock-ins. We are able to move from one model to another model with relative ease. With that, I'll pause here, but thank you so much for this opportunity. On to another intervener, Ms. Nirishka Shetty. She is the Chief Executive Officer, Precision Development. I'll request you to kindly limit your intervention to 3 minutes, please. Thank you, Pramodji. I just want to echo again congratulations to the ministry on this milestone. I'll keep my intervention short. I just want to flag 2 points based on the questions you raised. One is on adoption strategies. I think that the key to this working as we scale is that the system learns from the feedback and improves over time as we add new data and as we add new content. I think the advantage of technology is already the platform will collect a lot of data about engagement, who's dropping off when, what types of questions are being asked. And I think it's really important that we invest in understanding that data and identifying areas for improvement. But the second thing I would advocate for is also building in more structured farmer feedback. I think Parimalji said this earlier, but it's really important to understand where farmers are dropping off the system. Is it because the content is not actionable? Is it because the channels are not the right channels? Is it that the advice is accurate, but then they can't act on it? So the input is not available. Understanding for different groups of farmers where improvement areas arise, I think is a concrete way of improving the service as we scale. And so we both need to be able to diagnose these problems, but then also test and improve them as we scale. So that's one bucket. I think just the second bucket of things I'll talk about are the KPI questions you raised.
there was lots there about tracking languages and schemes and uptake, and I think that's a great starting point. I think it would also be good to think about things like shifts in behavior, improvements in knowledge, and our ultimate gold star, which is improvement in resilience and incomes. And so investing in that type of monitoring and learning efforts, I think, would also be great as we think about, the ultimate North Star of improving farmers' lives through this type of service. Thank you. Thank you so much. Now we'll move on to Mr. Paritosh Anandji. He is the Chief AI and Digital Officer, Vardhani Foundation. Over to you. Thank you for inviting me. I'll keep it short. I have just three very short points. One is based on the presentations I saw in the past hour, I feel there are too many diverse chatbots available in the country. There's a Sathi, there's a Sarthi, there's a eMitra, and then state specific. So at some point of time, we all need to converge this into Bharat Vistaar, else the sanctity or the the quality of these suggestions will vary across the chatbots. So that puts us a risk in terms of farmer trusting which one to trust and which one not to trust. The second point which I want to make is that I saw a lot of discussion focused on improving the input and output. By input, I see, yes, we need more data, we need more diverse set of information. Output is that we need better models, precision models targeted to certain things. But I don't think we have covered the outcome part very clearly with respect to the KPIs. So ultimately, what outcome are we chasing? And whether all these inputs and outputs, how are they tying up to the outcome which we are chasing with respect to the farmers increasing the livelihood? The third point is in terms of how do we generate value for the farmer and the ecosystem. So I'll take an analogy where we may have built a good golden palace, brilliant architecture, but we need to have the farmer come in and utilize this palace of message. So how do we make sure that it is just not we wait for the farmer to come in and ask for information and advisory. It has to be proactively taken to the farmer, whether it is a push notification, and with AI and AgriStack integration, all this information is available and this can be done. When I used to be in a private sector, we used to say a word called "jo dikhta hai wo bikta hai." So we have to make sure that this is visible to the farmer as much as possible, so that the uptake is higher, and not wait in terms of while it value is generated over a period of time. That's all from my side. Now I move on to Mr. K.S. Rautala, the specialist. He's a specialist in infrastructure from Asian Development Bank. Rautalaji, kindly limit your intervention to 3 minutes. Good afternoon, sir. You can hear. Thanks so much. So first of all, I think we would like to thank Ministry for inviting us and giving us this opportunity. We are honored to be part of your AgriStack development team together, and we are hoping that the discussions will now go into scaling up of the AgriStack, as well as now when discussion of AI is happening. I think the most important part, which from our side as development partner, is the scaling up of this, and also looking at slightly more medium-term view of this as to how we can build the sustainability into this whole architecture of the system, how financing can be brought in so that the financing doesn't look at only the initial parts of it, but also sustaining it over a period of time, maybe for 6-7 years. The another issue which we feel, because we work with different segments, we work in irrigation projects also, we work in value chain projects also, we work today in diversification into other sectors like fisheries, etc. This synchronization is important. That synchronization of what we are trying to bring through the technological interventions, along with what we are bringing through the on-the-ground interventions. So that part is where we are looking at possibility of at least picking up a few states where there is, let's say, not same progress as Mahavistar, for example. If you look at Mahavistar at the other end of the spectrum, we have multiple states in different parts of the spectrum where more support is required, and probably we can discuss as to how to do that, along with the value chain interventions, which will make sure what we were talking about, value delivery. Value delivery to farmer, if it doesn't happen, then everything remains pushed for a long time. So this is what we want to stress on, that as to how we can think of this whole
public side of the investments, bringing private sector into it in such a way that all the guardrails are in place, but at the same time, the value delivery will happen through the private sector more. That's the whole issue from our side. So we really look forward to discussions going beyond the budget and going into a program where I think together we can work. Third, last part, which I would say is that since India is leading in this whole agri-DPI field, we feel that India can become a beacon of strength, and we can have some kind of good center of excellence, which actually works at a global level. Like we have been able to get Clean Plant Program partners from different countries. Similar to that, I think we can look at India becoming a center of excellence for DPI and agriculture, especially for the smallholder farmer, because that's the I think spectrum part which is very different from other countries, and that's where the whole public sector infrastructure investment from the government is important because of smallholder farmers. So I'll stop at this. Thank you. Thank you so much. Now we move on to Mr. Shubham Chaudhary. He's present with us. He's the farmer practicing precision agriculture. I'd request him to say a few words. थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने मेरे को एआई चैटबॉट सबसे पहले यूज करने का मौका दिया और उसको यूज करने के बाद जो मुझे पहला फीडबैक समझ में आया वो आपको वीडियो में मेरी हंसी से समझ आएगा कि उसने सबसे पहला जो सजेशन दिया वो रिमूविंग ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, जो आजकल कोई भी नहीं बताता है। सब बोलते हैं कि भाई दवाई डालो तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन सबको ये समझना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर रिवाइवल नहीं है, वो न्यू ग्रोथ पे फोकस करता है प्लांट। तो ओल्ड जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको अपन रिमूव करेंगे तभी अपन उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसका मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने खेत में भी देखा था। जो मेरे पाउडरी मिल्ड्यू फरवरी के फर्स्ट वीक में आई थी, मैंने उसको इन्फेक्शन को कट आउट कर दिया एंड देन आई टुक अ स्प्रे। जो मेरा स्प्रे का शेड्यूल 5 डेज का था वो 15 डेज पे शिफ्ट हो गया है। मेरा एक तो एक्सपेंस कम हो गया है, दूसरा मेरा उसमें केमिकल का यूज भी कम हो गया है। उसने जो सजेशन दी थी वो चीपेस्ट टू द मोस्ट बेस्ट वाली थी। उसमें एक चीज इसमें इंप्रूव हो सकती है, जैसे उसने चीपेस्ट मोड बताया सल्फर। सल्फर को अपन एक लिमिटेड टेम्परेचर में ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल गिव बर्निंग इफेक्ट्स। तो वो अगर नॉलेज इसमें ऐड कर दी जाए तो वो अपने को और बेहतर सुविधा दे सकती है। दूसरा जो उसने मोस्ट इफेक्टिव वे बताया था उसके अंदर भी एक अपन एडिशन कर सकते हैं कि जो जोन ग्रुप के फंगिसाइड्स थे उसने सजेस्ट किए थे वो अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, प्लांट की ग्रोथ को भी फंगस की ग्रोथ को भी। तो अगर आपका प्रोडक्शन रेडी है तो आपको उस ग्रुप के फंगिसाइड्स का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रोडक्शन हिंडर हो जाएगा, मतलब पूरी आपकी मेहनत खराब हो सकती है। आप उसकी जगह कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव या फिर रिपीटिव स्प्रे सजेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका 3 और 4 मंथ्स का जो यूसेज है, जो आपकी मेहनत होगी वो वेस्ट न चली जाए गलत यूजेज की वजह से। That's all. Thank you. बहुत बढ़िया। So we heard a real farmer using a real thing and giving you his feedback. We'll move on to we'll get states perspectives. We have Mr. Narvadeshwar Lalji. He's the Principal Secretary Agriculture from Government of Bihar. And Bihar has got Bihar Krishi, and they've also evinced a lot of interest in integrating their system with Bharat Vistaar. We would like to know the state's perspective on the roadmap ahead. Narvadeshwar ji, over to you. नमस्कार सर, बहुत सारे किसान भी हमारे ब्लॉग्स में जुड़े हुए हैं सर, इस सुन रहे हैं इस वेबिनार में सर। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने मई 2025 में बिहार कृषि ऐप लॉन्च किया था और अभी हमारा भारत विस्तार के साथ इंटीग्रेट हो चुका है सर। लोकल लैंग्वेज जो है हमारा भोजपुरी, मैथिली और मगही अगर हमारा इसमें एक्टिव हो जाएगा तो मेरा नंबर जो है करीब अभी 8-8.5 लाख से ऊपर है, तो हमको लगता है वो नंबर बढ़ेगा नहीं। और जो सभी एक्सपर्ट की बातें मैंने सुनी है सर, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में तरीकन सिंह जी ठीक ही बता रहे थे कि फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि क्या फार्मर्स को एडवाइजरी दी जा रही है और पर्टिकुलर एरिया का क्या उस पर हम लोग को शुड बी गिवन। हम लोग के पास ऐसा कुछ फोरम होना चाहिए जिससे कि हम लोग उसको एनालाइज कर सके कि क्या फीडबैक दिया गया और कितना इफेक्टिव रहा, उसका आउटकम क्या रहा।
और बिहार के बारे में कुछ बिहारी डागा जी जो भी बोल ही चुके हैं कि क्या हम लोग कर रहे हैं सर। मुझे अच्छा लगा सुन के कि IMD इज ऑल्सो ऑन बोर्ड। सर बिहार में एक प्रॉब्लम ये है कि जब बारिश के महीने आते हैं बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है और बहुत ज्यादा डेथ होता है। तो हम लोग बिहार सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो किसी US एजेंसी के साथ मिलकर के एक ऐप डेवलप किया था जिसमें कि 45 मिनट पहले 45 मिनट पहले ही हम लोग किसानों को ये बताते थे कि 20 किलोमीटर के रेडियंस में कहाँ पर बिजली गिरने वाली है। अगर ऐसा कुछ हम लोग इस ऐप में भी कर सके तो बिहार के लिए अच्छा होगा बिकॉज बहुत सारी जानें इसमें चली जाती हैं। सर धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही सर। और बाकी जो मैं बोलना चाह रहा तो इतने सारे एक्सपर्ट ने जो बातें कही है सर उसमें कवर हो गया है। धन्यवाद सर। Thank you, Narendeshwar ji. Now we move on to Ms. Assam. Over to you, Aruna. Namaskar, sir. I think morning se we have been listening to all the expert presentations and almost everything has been covered. I'll just make 2-3 brief points here, and not just as a state but in general as well. Sir, we have been talking about using the available data to identify preferences. My suggestion is that this preference identification, we should not limit ourselves to just the agricultural sector, even the allied sector, because जब खेती पे किसान होता है, for him doing those 2-3 activities together, that is how agriculture is done, specifically here in Assam. The second point, one of the major strengths which is coming up and is doing very well, at least in Assam, is FPO, sir, because that is helping us to grow commodities which can have value addition and also have a very good export market. So, for example, recently we have exported ginger to London, sir, but the problem was that when this ginger was brought, they generally bring the ginger on the head load, so they break it into pieces, whereas for export it requires to be in a full size. So these are small interventions which we are learning, and how we can use AI is that what is the requirement of the various markets, the prices in the various markets, how aggregation can be done. If that data is available to the farmer or the FPO, they are better prepared to face the market. So that was my second suggestion, sir. Third is that dedicated compute is going to be our biggest challenge. So how do we work towards getting the dedicated compute for this particular sector? And lastly, sir, there are, like was said by Parimal and a lot of other speakers, there are a lot of portals and information, and it's a maze of information which is there. But to the farmer, the access has to be simple in his language and relevant. So, how do we make this possible is something that we will have to look towards as we move in this journey in the future, sir. Thank you. So the last intervener today, because of the short, we do not have time. After that, 2:30 we have to close. Is Miss Prapti Upadhyay from Viksit Bharat Young Leaders. Over to you, Prapti. Please conclude your intervention in 3 minutes, please. Miss Prapti. You're not there. You're there. Anyway. Okay, so anyone else? So, One quick to what Balaji said. I think if we are going to make data accessible to people, the first step, and if AI is a medium, the first step will be to make data accessible to AI. And I don't just mean for training, but at inference time, having KB's knowledge bases, which I think the entire ministry and its ecosystem can create to simplify and kind of collate the knowledge on a single base, right? Many people have been talking about that. So ICAR, everybody, they can say that we will come out with MCPs, for example. MCPs is a protocol that is used. I mean, the implementation details do not matter, but MOSFI has done that, for example, recently.
where for their data, they came out with an MCP and they said anyone can use this. So similarly, you can have sensitive, non-sensitive data, but at least on the advisory front, taking all of these databases, converting them into knowledge bases is a non-trivial exercise that can be done by specialists, but that should be done so that AI can make use of the data accurately. And just continuing on that, maintaining the linkage between the original knowledge base and what you distill out for inference time usage will be also important because there's a lot of dynamism that's going to be involved, right? Yeah. So we don't want inconsistencies. Correct. So that provenance, the tracing back mechanism will be very important. So I think we'll conclude with that. A lot of good suggestions have come today. I would like to thank everyone, the speakers who have come all the way, have attended physically here, those who have joined remotely over VC, and हमारे किसान भाई बहन जो जुड़े हुए हैं इससे वेबकास्ट से भी करीब 30-40 लाख किसान भी इससे जुड़े हुए हैं वेबकास्ट से और यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेशन उनके लिए यूजफुल रहा होगा। उस पे एक फीडबैक भी सबसे लिया जाएगा कि सेशन कितना अच्छा था या नहीं, या और क्या चाहते हैं उससे। बट मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं सबको, क्योंकि समय नहीं था ज़्यादा, तो हम सब उनके सजेशन भी लिए। लेकिन एक ईमेल आईडी मैंने आपको लास्ट अपने पीपीटी में दिखाई थी, us-it@gov.in। उस पे अपने सजेशंस आप भेज सकते हैं। मैं वापस रिपीट करूंगा, us-it@gov.in। इस पे आप अपने सजेशंस भेज सकते हैं, जिससे कि हम उनको कोलेट कर पाएंगे और ये सुझाव भारत विस्तार को और अच्छा बनाने में हमारी सहायता करेंगे और किसानों को हम और अच्छी सेवाएं दे पाएंगे आपके सुझावों के द्वारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.
सेक्शन 1 आपको आवाज आ रही है? ऑडियो चेक कर लिए थे कभी हम लोग यहाँ आवाज आ रही है? मनोज सर आप एक बार ये सर सेशन 1 में आवाज आ रही है।
संदीप, यहाँ तो नेट भी नहीं चलता अंदर अच्छे से यार इसमें। संदीप, तुमको कल ही बोल देना सर इस रूम में नहीं होता, अला दूसरा रूम ढूंढ के लाते फिर। पर हमें भी नहीं पता था कि इतना अच्छा बैठने की जगह और कोई बैठने से मतलब यहाँ तो क्या बैठने की 10 कुर्सी होती चलता है काम। अरे जहीर माइक ऑफ करो अपना, माइक ऑफ। नहीं नहीं सर, हम थोड़ा सा ऑडियो वीडियो टेस्टिंग करवा रहे हैं। संदीप, सर अब तो कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं है ना? नहीं, उधर से होगा शेयर अब। और प्रेजेंटेशन की वजह से बस, और बाकी सब स्ट्रीमलाइन था। प्रेजेंटेशन की वजह से कैसे? क्योंकि उसके लिए हमें अपना इनपुट देना पड़ेगा ना। हाँ संदीप, एक बार ऑडियो वीडियो टेस्टिंग करना। अरे एक बार फिर से कर लो ना यार। नहीं निकल, वो जो लीड लेके आया ना बता रहा है, वो लीड मिल जाती तो लैपटॉप यहाँ रख देते। उसमें नहीं लगता सर। एक बार टेस्ट कराइएगा। टेस्ट करा दीजिए, बोलिए हेलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर आपका लेआउट होकर। वीडियो भी आ रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर। ठीक है चल।
मिनिस्ट्री का? हाँ सर अगर कुछ पूछे इसलिए पूछे। एनएससी हेड करो वीसी एमओडी का प्रेजेंटेशन मिल गया? जनरल का नंबर दे रहा हूँ। अभी नहीं आया सर, मिल गया? अभी नहीं आया। नहीं आया मेरे कॉपी। मैडम छोटी मैडम है, आप उनको भेज दीजिए। यही लिखा हुआ है, यही मैसेज आया है। अभी तो पॉलिसी डिवीजन इस अभी कंपाइलिंग अभी आ रहा है, अभी कंपाइलिंग आ रहा है, कंपाइलिंग का ही मैसेज आ रहा है कि प्रेजेंटेशन अभी कंपाइलिंग हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी पॉलिसी डिवीजन कंपाइल कर रहा है। नहीं, एमओडी रूरल का प्रेजेंटेशन मिल गया कि नहीं मिला है? एमओआरडी का भी पहुंचा ही नहीं, जहाँ तक उन्हें भेजा ही नहीं। अभी तक सिर्फ फिशरीज का मिला है, फिशरीज का ही आया अभी बस। ओके ओके ओके। नहीं अटैच बाद में। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का पीपीटी शेयर हो चुका है वीसी डिवीजन में, प्लीज चेक। बोलो बोलो, या तो तुम्हारा डिपार्टमेंट का पूछना है था। सर बोलते हैं तो अच्छा रहेगा ना।
Sorry, Mike.
उस वेबिनार को क्लियर करना प्रेस रिलीज वगैरह This webinar is being recorded.
शुरू करें। माननीय मंत्री जी की अनुमति से अब हम लोग पोस्ट बजट वेबिनार के कंक्लूडिंग सेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो हमारी सब थीम में डिस्कशंस हुए हैं उसको लेकर हम लोग प्रेजेंटेशंस करेंगे एक एक करके। तो सर्वप्रथम एग्रीकल्चर करेंगे, उसके बाद फिशरीज, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट। तो हम लोग यही क्रम फॉलो करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि जो कृषि का प्रस्तुतिकरण है उसको लगाया जाए प्लीज। सर नेक्स्ट। सर कृषि में हम लोग ने सब थीम वाइज 5 प्रस्तुतिकरण मतलब सब थीम वाइज डिस्कशन हुए हैं और उसमें हम लोग ने ये संख्या दर्शाई है कि कितने लोगों ने उसमें अटेंडेंस रहा है। सर कोकोनट प्रमोशन स्कीम में 18,000 से ज़्यादा अटेंडीज थे सर। उसी तरह से कैशू और कोकोआ डेवलपमेंट में 60,000 सर। कोकोनट से ज़्यादा इसमें? हाँ जी सर। और प्रमोशन सैंडलवुड और अगरवुड में करीब 3 लाख से अधिक सर। फ्यूचर स्ट्रैटेजीज फॉर एनिमल वॉलनट में करीब 2,000 और भारत विस्तार में 40 लाख, क्योंकि सर इसमें पीएम किसान के सारे लोग जुटे थे सर। और सर अभी ये फिगर में और भी इजाफा होगा, क्योंकि अभी हम लोग को लास्ट में जब कंक्लूड होके हमको जो वेब कास्टिंग हुआ है सर उसके भी फिगर्स आएंगे तो ये फिगर्स बढ़ जाएंगे सर। तो जो ये सेशन खत्म होगा तो सर ये सब फिगर्स में फिर इंक्रीज होने की संभावना है। नेक्स्ट सर, अब थीम वाइज जो सजेशंस आए हैं मैं उस पर आता हूं सर। कोकोनट प्रमोशन स्कीम में सर जो सजेशंस रहे, एक तो सर कोकोनट प्रोडक्शन के को बढ़ाने की ये सुझाव आए हैं, जिस ताकि जो हमारी फ्यूचर डिमांड है सर कंजम्पशन की और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, वो दोनों हम मीट कर सकें अपने ही संसाधनों से सर। जो हमारे देश का उत्पादन है उसी से मीट कर सके। तो सुबेरे भी ये बात हुई थी कि ओल्ड सेनाइल और अनप्रोडक्टिव प्लांट्स हमारी बड़ी संख्या में हो गए हैं, उनको एक सिस्टमैटिक और फेज्ड मैनर में सर उनको बदलने की ज़रूरत है, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो ये एक बात आई कि कम से कम जो भी टारगेट रखे तो 50% ऐसे प्लांटों का मतलब प्लांटेशंस को हम लोग रिवाइव कर सके, उसका लक्ष्य रखना चाहिए सर। प्रोडक्शन हाइब्रिड सीडलिंग्स और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज की सर आवश्यकता पे जोर दिया गया है सर। और एक जो सुझाव आया कि जो डिमांड और सप्लाई है सर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की, वो पूरी की जानी चाहिए। और टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन इन कोकोनट का सर एक ये विशिष्ट सुझाव आया है कि उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए एक नया ये पहल करके। सर ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है इसकी सीडलिंग्स का, उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात रखी गई है, ताकि सर जो ऊपर बात हुई कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको मीट किया जा सके। सर हैंड होल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ एफपीओज भी एक इसमें विशिष्ट सुझाव आया है। कोकोनट सेक्टर में हम लोग को एक ये मतलब फोकस्ड वे में सर एफपीओज का भी इसमें डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है सर। एक ये भी बहुत है कि डिजिटल टूल फॉर ट्रेसेबिलिटी ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स, ये अभी हमारे देश में नहीं है सर। इसकी भी बात आई कि इनका पूरा प्रोडक्ट्स का सोर्सिंग ताकि ट्रेसेबिलिटी रहे सर। और ये चीज़ जब हम व्यापार करते हैं और एक्सपोर्ट्स करते हैं तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाती है कि हमारे जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है उसका सारा ट्रेसेबिलिटी रहे और पेस्ट और डिजीज का सर्वेलेंस भी उसी के माध्यम से हो सके। नेक्स्ट सर, और इसमें आगे बढ़ते हुए यही फिर से होलिस्टिक सर, इसमें पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको टैकल करने की क्षमता अभी विकसित होनी है सर, क्योंकि उसमें कुछ कमजोरी रही है, प्लांट्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, तो उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात आई है सर। सॉइल बेस्ड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है और न्यूट्रिएंट्स है, और इंटरक्रॉपिंग को भी बढ़ावा देने की जरूरत इसमें आई है, ताकि मतलब सर प्रोडक्शन भी अच्छा हो सर, हेल्थ ऑफ प्लांट्स भी अच्छा हो और किसान की भी आय बढ़े सर। क्रिएशन ऑफ स्किल्ड लेबर्स की भी जरूरत है सर। इसमें भी हम लोग को कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना होगा, ताकि हार्वेस्टिंग, हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेसिंग में हमारे पास स्किल्ड हमको लोग मिल सके सर। सर जीरो वेस्ट इंडस्ट्री है ये सर, इसका हर अंश उपयोग होता है जो ये प्लांट है सर, तो उसको सर पूर्ण रूप से हमको एक सर्कुलर इकोनॉमी टाइप में डेवलप करना होगा, ताकि
जो भी आदमी इसमें इसका उत्पादन करे उसको पूर्ण उसका लाभ मिल सके सर, हर उसके अंश का सर। सस्टेनेबल पैकेजिंग की भी बात हुई है, जो उसके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें भी मॉडर्नाइजेशन और मशीनरी की भी जरूरत एक आई है सुझाव में सर। ये सब बहुत विशिष्ट सुझाव हैं सर, जो हमारे दृष्टि में अभी तक इंटरनल डिस्कशंस से बियॉन्ड भी हैं सर। इस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने की बात है, इनोवेटिव कोकोनट प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करने की बात आई है सर। नेक्स्ट सर, अब इन सब का वे फॉरवर्ड एक ये देखा आ गया है ग्रुप के द्वारा कि हमको ग्लोबल लीडर बनना है कोकोनट और कॉयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में बाय 2030। ये एक लक्ष्य रख के हम लोग को आगे बढ़ना है, और इसमें सारे लक्ष्य होने चाहिए। इन्हांसिंग फार्मर्स इनकम, जो इसका सतत ग्रोथ है वो होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान हो, वैल्यू एडिशन पे। तो एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच के साथ सर इसको अब हमको एड्रेस करना होगा, और जो हमारी अगर स्कीम बनती है तो उसमें ये सारे अवयव होने चाहिए सर, कंपोनेंट्स उसके ये रहने चाहिए। और स्टेक होल्डर्स, ये भी एक अच्छा सुझाव है कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं सर, चाहे फार्मर्स हो, नर्सरी मैन हो, प्रोसेसर, साइंटिस्ट, एक्सपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन सबको सर एक प्लेटफॉर्म में लाने की जरूरत है, ताकि हम मतलब समय समय पर उनके विचार आदान प्रदान होते रहे, और जो भी हम काम कर रहे हैं, सब सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका हम लोग को लाभ मिल सके। नेक्स्ट सर, ये नेक्स्ट सब थीम है नेशनल कैश्यू एंड कोको डेवलपमेंट प्रोग्राम की टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। इसमें भी सर जो मॉडर्न कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पे जोर दिया गया है, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज को बेहतर बनाना, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके सर। कोकोआ और कोकोआ क्लस्टर्स को मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंटीग्रेटेड फैसिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मार्केटिंग की भी बात की। ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी डेवलप किया जाए जहां पे ये स्टेट्स हैं, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके सर, इसके पूरे वैल्यू चेन को। फिर कैश्यू और सीड्स गार्डन की बात हुई है सर, तो इसको भी हम लोग को इसमें आगे लेके चलना है सर। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन, ग्लोबल मार्केटिंग को इन्हांस करने की जरूरत है, ताकि ये हम इसमें लीडर बन सकें कैश्यू और कोकोआ प्रोडक्शन में। ICR and other research institutes should focus on developing improved varieties. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हुई है प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ सर, ताकि मतलब इसको पूरे वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन कर सके। और कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज की भी इसमें बात हुई है सर, इस पे काम करने की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट सर, इसमें वे फॉरवर्ड यही है कि हमको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का प्रोडक्शन, ताकि उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके क्षेत्र में। एरिया का एक्सपेंशन करना होगा सर, नए क्षेत्र को देखने होंगे कहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल एरिया से भी आगे बढ़ के कहाँ पे इसका विस्तार किया जा सकता है। ये हमारे एक्शन प्लान का पार्ट बनना चाहिए सर। और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, यूज ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज, INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो ये पूरा पैकेज डेवलप हो सर। इन्हांस प्रोसेसिंग और PHM फैसिलिटीज की भी बात की गई है, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की। और मार्केटिंग लिंकेज और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसका स्केलेबिलिटी हम लोग को अचीव करना है, और इसको मेजर प्लेयर बनना है सर इन दोनों क्रॉप्स में भी। नेक्स्ट क्रॉपिंग का भी अच्छा, हाँ, इंटर क्रॉपिंग का भी इसमें अच्छा स्कोप है सर। नेक्स्ट सर, अब ये तीसरा जो हमारा विषय है, प्रमोशन ऑफ सैंडलवुड एंड अगरवुड थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री। सर, इसमें भी एक्सपेंशन ऑफ सर्टिफाइड नर्सरी की बात हुई है सर, क्योंकि ताकि टिश्यू कल्चर का प्रोपगेशन हो सर, हाई क्वालिटी सैपलिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर कल्टीवेशन, आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन अगरवुड का, ये भी एक विशिष्ट सुझाव आए हैं सर। इंटीग्रेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ये भी सर विशिष्ट है सर सुझाव, क्योंकि ये हमारी जो कागज बना था उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। सिंगल इंस्टीट्यूशनल नॉलेज प्लेटफॉर्म की भी बात की गई है, जो पहले भी थी, ताकि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर आदान प्रदान हो सके। हार्मोनाइज MSME पॉलिसी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सब थोड़ा सा विषय मतलब बियॉन्ड एग्रीकल्चर है, बट इसको रखने में और इस पर आगे विचार करने में संबंधित विभागों से हम लोग को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है सर। क्लाइमेट मॉडलिंग की बात की है सर इन क्रॉप्स के लिए, ताकि रीजनल एक्सपेंशन क्रॉप का हो सके। और एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। इसमें सर इसमें जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स है उसको भी सर देखने की जरूरत है। नेक्स्ट
सर वे फॉरवर्ड में यही है कि इसका हम लोग थ्रू फार्मर पार्टिसिपेशन इसको आगे ले जाना है, सैंडलवुड को और अगरवुड प्लांटेशंस को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल्स की भी बात आई है सर, इसको कैसे हम लोग ला सके ताकि जो क्षेत्र में उसका स्वीकार्यता भी हो सर और ये लाभकारी भी बन सके, बोथ फॉर फार्मर एंड एज फॉर जो प्राइवेट पार्टी है सर। विलेज लेवल वैल्यू चेन, अगरवुड चिप प्रोसेसिंग, ट्रेडिशनल ऑयल डिस्टिलेशन, कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में विकसित करने की बात है। और इसकी सर्कुलर इकोनॉमी का इसमें भी आया है कि सर उसको कैसे हम लोग सुदृढ़ करें। सर सैंडलवुड 12 से 15 साल लेता है मैच्योर करने में, तो इसमें सर जो इसके बैंकिंग के लिए जो राशि की आवश्यकता है उसकी भी बात आई है कि इजी बैंकिंग और इंश्योरेंस और फाइनेंस सपोर्ट इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबी जेस्टेशन पीरियड है सर इसका। तो उस दौरान इंटरक्रॉपिंग की भी संभावना है सैंडलवुड में सर। एग्रो फॉरेस्ट्री में तो हाँ क्रॉपिंग चलेगा ही सर, उतने साल अगर नहीं आया तो करेंगे 15 साल। इसमें सर जो एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल्स हैं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट पूरे कंट्री में जो नेटवर्क है उसमें हमें कौन सा कहाँ इंटरक्रॉपिंग या सिस्टम होना चाहिए वो लाएंगे सर जब इसका डिटेलिंग करके वो सारी चीज आएगी। यस सर। असम अगरवुड प्रमोशन पॉलिसी 2020 है सर, उसमें कुछ ईजिंग किया है रिस्ट्रिक्शंस को और पोजिशनिंग को सर, उसको भी अध्ययन करने की जरूरत है सर। और उसको एक मॉडल अगर उचित रहा तो उसको मॉडल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। सैंडलवुड अगरवुड ग्रोन इन प्राइवेट लैंड्स में बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर क्रॉप्स। सर ये सब अगेन लीगल एस्पेक्ट्स हैं और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं जिसमें राज्य की भी जो नियमावली है, नियम है सर, उनको भी देखने की जरूरत पड़ेगी। बट इस पे सर ये सारे विशिष्ट सुझाव हैं, इस पे काम करेंगे जब हम इसको आगे ले जाएंगे। रीजन स्पेसिफिक प्राइसिंग पॉलिसी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को इसमें विचार आया है सर। नेक्स्ट सर आलमंड, वॉलनट, पाइन नट्स की फ्यूचर स्ट्रैटेजी के रूप में इसमें एक सर क्रिएशन ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तीनों के लिए सर ये सुझाव है। आलमंड, वॉलनट, पाइन नट के लिए अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करने में विचार की बात है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स फॉर मैनेजिंग प्लांटेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन, ग्लोबल मार्केटिंग, ये सर थीम जो है ये सभी टॉपिक्स में कॉमन चल रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी आवश्यकता है सर। इम्प्रूव वेराइटीज की भी बात सर सब जगह आई है, इसमें भी वो बात है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है और हाई यील्डिंग वेराइटीज हम कैसे डेवलप करें और उसको उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सर। नट जनरेशन क्लस्टर्स और इन पाइन नट्स का एरिया एक्सपेंशन ऑफ वॉलनट्स और आलमंड्स का, तो ये तीनों के लिए अलग सर, दो को एक संग रखा गया और डेवलपमेंट ऑफ नट ट्री जनरेशन पाइन नट्स के बाद। रोबस्ट वैल्यू चेन और प्रोसेसिंग करना है सर, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इसमें इन्वेस्टमेंट आना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से और एफपीओस को भी सर हम लोग इसमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर्स, क्योंकि ये तो इस एग्रो फॉरेस्ट्री है तो इसमें यह स्वतः ही आता है सर। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में सर हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस को हमको कम करना है, फार्मर्स इनकम को बढ़ाना है, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन और इन्हांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी हम रणनीति या योजना बनाएंगे सर उसमें ये सारी चीजों को हम लोग विचार करेंगे। नेक्स्ट भारत विस्तार सर, एआई पावर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। इसमें सर जो सुझाव आए हैं कि हमको लोकल डेटा जो है उसका भी उपयोग इसमें रखना चाहिए। यूज ऑफ मोर डाइवर्स हाई क्वालिटी लोकल डेटा फॉर मंडी प्राइसेस, वेदर एंड क्रॉप्स। तो जो सर हमको जहां से डेटा मिल रहा है उसमें लोकल डेटा को और इसमें जोड़ने की बात है सर। ऑल फार्मर्स सर्विसेज, जो जितनी तरीके की सर सेवाएं हैं उसको इसके संग जोड़ना है, जो कि हमारी आगे की गोइंग फॉरवर्ड सर रणनीति भी है। इंटरकनेक्टेड एआई सिस्टम्स सर, इंटर ऑपरेबल होने चाहिए सिस्टम्स, और स्टेट्स और रिलेटेड सेक्टर्स में अगर सर हैं तो उनको भी कैसे हम कनेक्ट करें अपने सिस्टम से, तो एक पूरा व्यापक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, इस पे बात है सर। कंटेंट सैंक्टिटी है सर, ट्रेन, क्योंकि सर हम जो उसमें जो भी कंटेंट डाल रहे हैं उसको एआई उपयोग कर रहा है सर, तो करेक्ट होना चाहिए सर, वेटेड होना चाहिए, ताकि किसी तरह से भी कोई ऐसा सुझाव फार्मर तक नहीं पहुंचे जो कि अनुपयोगी हो और गलत दिशा में ले जाए सर। यूटिलाइज फीडबैक सर, डेवलप एक्शन ओरिएंटेड मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट फीडबैक। ये सर फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भी फार्मर सेवाएं ले रहा है सर उसको वो कितनी उपयोगी है या उसके समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं सर, ये एक डायरेक्ट फीडबैक सिस्टम इसमें
आगे हम लोग गोइंग फॉरवर्ड इसको डेवलप करना है। नेक्स्ट सर, जो इसका वे फॉरवर्ड है, हमको इंश्योर विजिबिलिटी इंश्योर करना है सर। इसका मतलब भारत विस्तार सर अभी मतलब फेज 1 लॉन्च हुआ है, तो इसकी मार्केटिंग और पॉपुलराइजेशन करने की जरूरत है और एक संस्थागत रूप देने की जरूरत है सर, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशन इसको अडॉप्ट नहीं करेगा सर, तब तक फार्मर से अपेक्षा करना मतलब थोड़ा सा उसके लिए हम लोग को काम करने की जरूरत है। ऐड लोकल लैंग्वेजेस सर, आगे जाके तो सर ये अल्टीमेटली सभी भारतीय भाषाओं के लिए हम लोग को कोशिश करनी है, तो फेज वाइज इसमें आगे बढ़ेंगे सर। कैप्चर फीडबैक जो बात हुई सर कि बिहेवियरल पैटर्न्स और फीडबैक, तो हमको अपनी भी सेवाएं इंप्रूव करने में सहायक होंगे सर। सपोर्ट इनोवेशन सर और स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स, कंपनीज को सर एक बार ये स्ट्रेंथन होता है तो उनके भी सर इसमें उनके भी इनोवेशंस को हम ला सकते हैं इसमें। शेयर डेवलप कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सर बहुत बड़ी आवश्यकता होगी कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें, तो उसमें एक शेयर डेवलपमेंट का मॉडल डेवलप करने की आगे बात बनेगी सर। नेक्स्ट क्लाउड की भी। हाँ, थैंक यू सर। अब मैं फिशरीज विभाग से सर अनुरोध करता हूं कि वो अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिलक्ष लिखी है, मैं सेक्रेटरी मत्स्य पालन विभाग हूं सर। कैन आई हैव द प्रेजेंटेशन प्लीज? प्लीज शुरू करें। नहीं, वो अपलोड कर रहे हैं सर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सर, ब्रेकआउट सेशन जो हुआ फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका टाइटल था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर एंड अमृत सरोवर्स फॉर फिशरीज एंड स्ट्रेंथनिंग कोस्टल फिशरीज वैल्यू चेन। इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, लगभग 1500 पार्टिसिपेंट्स जुड़े। ये नंबर्स अभी भी कंफर्म और ज्यादा बढ़ेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग सर। इसमें फिशरीज, फिश प्रोड्यूसर फार्मर एसोसिएशंस, स्टार्टअप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सभी राज्य सरकारें, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, एमपीडा, आईसीआर संस्थाएं, फिशरीज यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, केवीके, नीति आयोग, नाबार्ड और हमारे जो साथी मंत्रालय हैं, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, एमएसएमई और माय भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी सर पार्टिसिपेट किया। लगभग 20 स्पीकर्स ने अपने विचार रखे सर और 60 से ज्यादा रिकमेंडेशंस आई हैं। सभी रिकमेंडेशंस जो कंट्रीब्यूशंस की गई स्पीकर्स के द्वारा और इंटरवेंशनिस्ट के द्वारा, उनको एकत्रित करके हमने 4 भागों में बांटा है सर। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, और चौथा है सर टेक्नोलॉजी, जो कि कॉस्ट कटिंग थीम है। नेक्स्ट। तो जहां तक प्री प्रोडक्शन की बात है सर, सबसे ज्यादा जोर इस बात पे, फीडबैक इस बात पे आया कि प्रजाति की स्टॉक इंप्रूवमेंट और जेनेटिक इंप्रूवमेंट, मतलब गुणवत्ता का बीज और गुणवत्ता का ब्रूड स्टॉक रिजर्वायर में, अमृत सरोवर में या जलाशय में इसका होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ब्रूड स्टॉक बैंक्स बनाए जाएं और फिंगरलिंग और स्टॉकिंग की अच्छी व्यवस्था की जाए, और रिजर्वायर के साथ ही नर्सरी और रेयरिंग सिस्टम्स का इजाद भी किया जाए, जिसके लिए स्किल्ड मैन पावर की ट्रेनिंग की जरूरत है। और साथ ही साथ फीड प्लांट, क्योंकि हमारे आज के दिन जितने भी जलाशय हैं सर या अमृत सरोवर हैं, फीड प्लांट उनसे बहुत दूर हैं, जिससे कॉस्ट में इजाफा होता है। तो फीड प्लांट को रिजर्वायर और अमृत सरोवर के पास रखने की बात की गई। जहां तक प्रोडक्शन, उत्पादन का सवाल है सर, सबसे बड़ी सजेशन ये आई कि केज और पेन कल्चर, जो आज के दिन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है किसी भी जलाशय में लगाने के लिए, उसको HDPE केजेस के साथ हमें प्रमोट करना चाहिए कमर्शियल स्केल पे। और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम, मैनुअल फीडिंग से हटके ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम्स पे हम आए। जो भी हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करें रिजर्वायर्स की, उसकी भी जरूरत महसूस की गई। और उत्पादन में जो महिलाओं के द्वारा बनाए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, या हमारे जो FFPO हैं, या जो कोऑपरेटिव्स हैं, प्रॉपर लीज राइट्स के साथ, जो एक राज्य सरकार का इख्तियार है, उस सारी चीज को भी हम देखना चाहिए। इस संदर्भ में हमने रिजर्वायर की गाइडलाइंस भी निकाली हैं सर, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने, उनको भी अमल में लाया जाएगा। और प्रोडक्शन स्टेज में हर तरह का फाइनेंशियल एक्सेस, चाहे वो KCC के माध्यम से हो या रिस्क कवरेज हो इंश्योरेंस के माध्यम से, उसका भी बहुत लोगों ने सजेशन दिया सर। और एक सजेशन जो लास्ट में जिसका आंकलन किया गया है
कि अफोर्डेबल पावर सप्लाई, जो भी सारे सिस्टम को रन करने की या एक्वाकल्चर को करने की पावर सप्लाई की स्थिति है, उसको भी राज्य सरकार की मदद से बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केट से जुड़ी चीजों में सर बहुत सारे वक्ताओं ने कोल्ड चेन की व्यवस्था और सुदृढ़ करने की बात की। आज के दिन 21 रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ से 2000 करोड़ के ऑलरेडी क्रियान्वयन की स्टेज में हैं, कुछ बन चुके हैं, लेकिन कोल्ड चेन की व्यवस्था सुदृढ़ करना, ये एक जिसके अंदर मॉडर्न लैंडिंग सेंटर भी हो, प्रिजर्वेशन यूनिट्स भी हो और स्टैंडर्ड्स की बात आई। और एक बात उभर के जो आई पोस्ट प्रोडक्शन में कि जितने भी एफएफपीओज, महिलाओं के ग्रुप्स और जिनको भी हम लीज राइट्स के माध्यम से जलाशयों में, अमृत सरोवर में काम करने का मौका देंगे, उनको मार्केट के लिए ई प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाए, जैसे कि ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म, और वो मार्केटिंग होगी तो आगे चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो या एक्सपोर्ट मार्केट हो, उससे उनका जोड़ और भी ज्यादा बनेगा। और इसी में इस बात की आई कि ट्रेसेबिलिटी भी हमें बढ़ानी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है सर, क्रॉस कटिंग है, चाहे प्री प्रोडक्शन हो या पोस्ट प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी में एंड टू एंड डिजिटल ट्रेसेबिलिटी। एक सुझाव बहुत अच्छा आया कि जलाशयों के अंदर अंडर वाटर सर्वेलेंस भी हमें करानी चाहिए ड्रोन के माध्यम से या और तकनीकें अप्लाई करके, ताकि हमें पता लग सके कि और क्या क्या रिसोर्सेज हैं जलाशय में जिसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसी के साथ एआई और आईओटी का एप्लीकेशन और पूरा जो हार्वेस्ट और लॉजिस्टिक्स का सिस्टम है उसको डिजिटाइज करने की भी बात आई। ये भी बात बहुत लोगों ने रखी और हमारे साथ मीटिंग में बहुत सारे स्टार्टअप्स भी थे। उन्होंने ये बात कहा कि स्टार्टअप्स जो अपने नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, रफली फिशरी सेक्टर में लगभग 300 स्टार्टअप्स आज के दिन काम कर रहे हैं सर, और इसमें से बहुत सारे कोस्टल एरियाज में, इनलैंड में हैं, तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए पूरी की पूरी स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट, इस सारी चीज का, इस बजट अनाउंसमेंट का क्रियान्वयन करने के लिए सर हमने कुछ टाइमलाइंस निर्धारित की हैं, जिनको ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नाबार्ड और राज्य सरकारों की मदद से हम इसका क्रियान्वयन करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी सर कि आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन के बाद डीपीआर, जिसका हम एक मॉडल डीपीआर भी सर्कुलेट करेंगे, और राज्य सरकारों से प्रपोजल लेने के बाद और उनको चेक करने के बाद कब लगभग 30 सितंबर तक हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास 400 जलाशय में और 100 अमृत सरोवर में जो भी प्रोजेक्ट्स हम कंसाइन करें, उनकी हम सितंबर के महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दें सर। और इसमें हम 2000 एफएफपीओ, 50 स्टार्टअप, 400 फिशरीज कोऑपरेटिव्स और 200 महिलाओं के द्वारा चलाए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको भी हम वैल्यू चेन में शामिल करेंगे। हमारा अंदाजा है सर आउटकम के तौर पे कि जहां जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 से 5 लाख टन आज के दिन जलाशयों से निकलता है, तो 10 लाख टन का एडिशनल फिश प्रोडक्शन हो पाएगा इन सभी संस्थाओं और भागीदारी के साथ, और 1 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को भी हम जनरेट करेंगे। तो हमने सर एक टारगेटेड अप्रोच रखी है कि प्लान ऑफ एक्शन रहे और एक टारगेट डेट हो जिसकी कंप्लायंस में हम इस बजट अनाउंसमेंट के क्रियान्वयन की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग से कि वो अपना प्रस्तुतिकरण करें। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेश पाल गंगवार है सर। मैं सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट हूँ सर। हमारे ब्रेकअवे सेशन का सर जो थीम था सर, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एनिमल हस्बेंड्री वैल्यू चेन सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट सर, इसमें इस थीम से संबंधित सर 2026-27 के बजट में 2 पैरास पे में इनका मेंशन है सर। दोनों बहुत स्पेसिफिक हैं सर। एक तो सर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर आधारित है वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर, और दूसरा पैरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर है जिसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम का जिक्र है सर, और स्केलिंग अप एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक एंटरप्राइज का जिक्र है सर, और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को बढ़ावा देना और साथ में लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित करने के का जिक्र है सर। नेक्स्ट सर, 16वें वित्त आयोग, ये एक अनाउंसमेंट एक ऐसे टाइम पर आया है जब सर हम 15वें वित्त आयोग से 16वें वित्त आयोग के लिए अपनी योजनाओं को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं सर, और हमारा विभाग सर इस पर इन दोनों बजट अनाउंसमेंट्स पे काफी समय से
इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहा था सर। तो सर हम लोगों ने जो हमारा सेशन था सर उसको 2 भागों में विभाजित किया सर, क्योंकि हम लोग काफी एडवांस स्टेज ऑफ प्रिपेयर्डनेस पे थे सर। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट की ओर से सबसे पहले जो 10 मेजर इंटरवेंशंस प्लान्ड हैं इन बजट पैरास को इंप्लीमेंट करने के लिए, और उसको हम लोगों ने अलाइन किया है सर 2030 के टारगेट्स जो विकसित भारत के तहत हैं सर। उनका हमने सर एक बेसलाइन प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ सर। उसमें सर कुछ तो जो है हमारे ऑलरेडी चलते हुए इंटरवेंशंस हैं उनके रिफाइनमेंट और एक्सपेंशन करने का प्रस्ताव है सर, और कुछ नए इंटरवेंशंस इसमें हमने प्रस्तावित किए हैं जो क्रिटिकल गैप्स हैं इन दोनों बजट पैरास के चलते सर, उनको एड्रेस करने का हम लोगों ने किया है सर। इसके बाद सर 15 पैनलिस्ट ने इसमें भाग लिया सर, और जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे सर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस के लोग थे सर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी के लोग थे। इसके अतिरिक्त सर करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक जो सूचना आई है विभिन्न माध्यमों से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है सर। नेक्स्ट। तो सबसे पहले सर जो हम लोगों ने जो इंटरवेंशन प्लान किए जो हमने इस सेशन में प्रेजेंट किए थे उसके बारे में मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा सर। इसमें सर एंटरप्राइज डेवलपमेंट में सर लाइव स्टॉक हेल्थ और डिजीज कंट्रोल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सर, और खासतौर से प्रोडक्टिविटी इन लाइव स्टॉक सेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर। हमारे ऑलरेडी चलते हुए प्रोग्राम्स हैं सर, उनको फर्दर बढ़ाने की बात थी सर। उनमें जो गैप्स थे सर जो पिछले हमने 15वीं वित्त आयोग की साइकिल में आइडेंटिफाई किए थे सर, इस 16th फाइनेंस कमीशन साइकिल में उन गैप्स को पर्टिकुलरली स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरी नेटवर्क और मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को स्ट्रेंथन करने को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है सर। एक सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो मेजर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट का टूल था, पिछले 10 सालों में सर इसके माध्यम से बोवाइन एनिमल में एआई जो है 20% से बढ़ के 40% हो गया, बट इसका अभी तक पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन जो है सर बोवाइन एनिमल पे ही था। लेकिन जो स्मॉल लिमिनेंट्स हैं, खासतौर से पिगरी है, गोट है, शीप है, इसमें अभी सर ये मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज नहीं आई है। तो अभी इसमें हम लोगों ने नए जो 16th फाइनेंस कमीशन साइकिल में एक तो बोवाइन एनिमल में इसका पेनिट्रेशन बढ़ाने का सर एक प्रस्तावित किया है सर 40 से 70% बाय 2030, और साथ ही नॉन बोवाइन एनिमल में भी पिगरी, गोट और शीप में इसको एक्सटेंड करने का भी एक प्रस्ताव किया है सर। सीड प्रोडक्शन का सर एक प्रोग्राम हम लोगों ने 15वें वित्त आयोग की साइकिल में चलाया है सर, उसको बढ़ाने का भी इसमें हमने प्रस्तावित किया सर। एक सर करीब 1.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज विलेजेस हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से कवर है। 1 लाख विलेजेस जो हैं अभी भी सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से कवर्ड नहीं है सर। उसके कारण जो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है सर डेयरी सेक्टर की, उसको वो एक्सेस नहीं कर रहे हैं और वो इनफॉर्मल सेक्टर में चल रहा है सर। उसको भी सर अभी हमारे जो व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 है सर, उसके तहत एक फेज्ड मैनर में अगले 3 साल में उन विलेजेस को भी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से कवर करने का प्रस्ताव हम लोगों ने प्रस्तुत किया सर। और इसके अलावा सर कलेक्शन और चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को वो करने के लिए सर, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने सुबह भी एक बताया था कि सर गोबर कैन बी ए मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द फार्मर सर, उसको गोवर्धन योजना के तहत सर जो सीबीजी प्लांट्स हैं उनको हम लोगों ने कवर करने के लिए जायका का भी योजना प्रस्तावित किया है जो कि बहुत एडवांस स्टेज पे है सर। इसके अलावा सर एनडीएलएम भारत पशुधन स्टैक जो है सर विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, इसमें करीब 36 करोड़ पशु ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सर, और करीब 8 करोड़ पशुपालक उस पर रजिस्टर्ड है सर। इसको बेसिकली व्हीकल ऑफ डिलीवरिंग ऑल द सर्विसेज, चाहे वो वैक्सीनेशन सर्विसेज हो चाहे एआई सर्विसेज हो, उसको हम लोग को इस्तेमाल करने का भी हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं सर। और साथ ही सर इसको अन्य सर्विसेज की डिलीवरी के लिए थ्रू एआई टेक्नोलॉजीज उस पर भी विभाग फोकस करेगा सर काम करने के लिए सर। और सर कुछ बहुत अनसर्व्ड एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट है, हिली है, ट्राइबल रीजन्स है सर, पीएमडीडीकेवाई के जो डिस्ट्रिक्ट्स और पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समितिज हैं, उन सब के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रावधान सर इसमें वहां हमने आज प्रस्तुत किया सर। नेक्स्ट एक सर नेक्स्ट सर ये जो पैरा 55 है जो पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के बारे में है सर, उसको हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सर कुछ हमने लगभग 6 कंपोनेंट सर इंटरवेंशन इसमें प्लान किए हैं सर, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये ऑलरेडी चल रहा है सर, इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन कुछ एक्टिविटीज के लिए जा जाता है, तो इसमें सर कुछ नई एक्टिविटीज भी जोड़ने का प्रावधान है, और साथ ही ताकि ये और अधिक गतिविधियों को इसमें हम ये 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था को लागू कर सकें सर। दूसरा ये नया कंपोनेंट सर हम लोगों ने प्रस्तावित किया है जिसमें कि
10% बैक एंडेड सब्सिडी फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेटनरी एजुकेशन में, पैरावेट कॉलेजेस में सर, पैरावेट एंड वेट कॉलेजेस में, वेटनरी हॉस्पिटल्स में सर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में, सीमेन स्टेशन, IVF सर, इन सभी गतिविधियों में सर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नॉर्मल एरियाज में 10% कैपिटल ग्रांट with a ceiling of 5 crores with 3% interest subvention from HIDF, और जो सर अंडर सर्व्ड एरिया है नॉर्थ ईस्ट एंड हिली रीजन्स एंड अदर अंडर सर्व्ड एरिया, उसमें 25% तक सर कैपिटल ग्रांट एंड 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में, अभी ये सर ज्यादातर सुविधाएं ये सब पब्लिक सेक्टर में है सर, अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आता है तो जो पब्लिक सेक्टर की सुविधाएं हैं वो सप्लीमेंट होंगी और हम सर्विस डिलीवरी बेटर कर पाएंगे सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ऑलरेडी सर हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है सर, जो 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल में था, उसमें लगभग 1100 न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स और फीड एंड फॉडर्स यूनिट्स स्थापित हुई हैं सर, 2000 पे काम चल रहा है सर। इसको स्केल अप करने का सर पैराग्राफ 77 में मेंशन है सर, तो इसको सर हम बढ़ाकर इस अगले 5 साल में करीब 10,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं, और इसकी भी कुछ गाइडलाइंस में सर हम प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं सर, और ताकि आसानी से फार्मर जो लाइव स्टॉक न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं इसको अवेल कर सकें सर। इस स्कीम के बेनिफिट को अवेल करने के लिए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो हम लोगों ने जब इनसे कंसल्टेशंस किए थे सर, तो उसमें आया कि सर क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द न्यू एंटरप्रेन्योर्स इज वेरी डिफिकल्ट सर, और उसके लिए सर अभी हम 75% तक क्रेडिट गारंटी का स्कीम, जैसा कि MSME को CGT MSE के तहत उपलब्ध है सर, हम लोगों ने इसके लिए भी एक अलग से सेक्टर स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रस्तावित किया है सर। सर एक और बहुत बड़ी डिफिकल्टी है सर, ये एग्रीगेशन का काम सर डेयरी और पोल्ट्री में काफी हद तक हो रहा है सर। अराउंड 50% ऑफ डेयरी सरप्लस मिल्क इज गेटिंग चैनलाइज्ड through aggregation by the village milk societies sir, but sir sheep, goat and piggery में सर ये एग्रीगेशन का जो लिंक मिसिंग है उनके अराउंड, और जो नए हमारे अभी नए हम लोगों ने कुछ लाइव स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारी एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम में जोड़े हैं सर, उनके अराउंड सर एग्रीगेशन के लिए सर हम लोग ये लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सर हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है, तो लगभग अगले 5 साल में 2500 LPOs बनाने का टारगेट है। ये बेसिकली एग्रीगेटर की तरह काम करेंगे, और ये सर जो है नेसेसरी इनपुट्स टू वैल्यू एडिशन जो इंडस्ट्री पर्टिकुलरली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको प्रोवाइड कर पाएंगे सर। एक सर हमारा इंश्योरेंस का जो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस का कंपोनेंट काफी वीक है सर, हमारे 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल में हमने इसको चालू किया था, लेकिन बहुत ही वो पायलट स्टेज पे है सर, तो उसको इस बार एक्सपेंड करने का है ताकि जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं सर वो डी-रिस्क हो सके, और फार्मर्स को जो लाइव स्टॉक के कैजुअलिटीज होने पर सर उनको सुटेबल कॉम्पनसेशन इसके लिए हो सके सर। नेक्स्ट सर, जैसा मैंने पहले बताया सर 15 पैनल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज प्रपोजल सर उन्होंने हमें इनपुट दिए सर, तो कुछ स्टेट्स से ये बात आई सर, स्टेट्स को अपनी PPP पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि वो भारत सरकार की योजनाओं से लाभ लेके और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देके सर इन योजनाओं को लीवरेज करके प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। दूसरा एक ये सुझाव आया था सर कि प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन जब बड़ी मात्रा में इसमें आएंगे सर, तो उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ सर हमारे को रेगुलेटरी रिजीम्स को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके स्टैंडर्ड मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। एक सर उनका ये कहना था कि जो फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर में आ रही, खासतौर से कुछ लैब्स ऑलरेडी और कुछ फैसिलिटीज ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में है, उनको गवर्नमेंट के लाइव स्टॉक प्रोग्राम्स के साथ भी लिंकेज प्रोवाइड करा जाए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे प्रोग्राम्स में यूटिलाइज हो सके सर। पर्टिकुलरली फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर ये कुछ सुझाव आया कि सेंट्रलाइज अटेंडेंस सिस्टम, कुछ आईटी डिप्लॉयमेंट का भी आया कि सर सेंट्रलाइज अगर हम आईटी सिस्टम्स डेवलप कर सकें तो इनमें काफी सारी क्वालिटी इनकी सुधारी जा सकती है। साथ ही सर ये भी एक सुझाव आया था सर कि स्किल्ड फैकल्टी का बहुत कमी है सर, तो कैसे इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जब आएंगे तो इनको किस प्रकार से स्किल्ड फैकल्टी की व्यवस्था की जा सके, उसके बारे में भी हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव इसमें आया था सर कि जो हमारा वेटरनरी एजुकेशन का करिकुलम है ये बहुत पुराना है सर, और बहुत ही जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे
के आते चलते सर एआई और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें नई आ गई, बट हमारे करिकुलम अभी भी पुराने टेक्नोलॉजीज पे आधारित है। तो ये था कि हमारे पूरे के पूरे जो वेटनरी एजुकेशन के करिकुलम को भी हमको देखना पड़ेगा, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा वीसीआई का जो आर्किटेक्चर है सर उसको भी हम लोगों को एक बार रिवैम्प करना पड़ेगा सर। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सर पृथक से विभाग इस पूरे के पूरे वेटनरी एजुकेशन के सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए अलग से रेगुलेटरी साइड पर भी काम कर रहा है सर। सर वेटनरी सर्विस डिलीवरी में फिलिंग ऑफ वेकेंट पोस्ट के बारे में आया, फिर ये भी आया है सर कुछ जगह पर कुछ राज्यों में बहुत कम पोस्ट क्रिएटेड है, उसके कारण से ग्राउंड लेवल पे सर्विस डिलीवरी के लिए सफिशिएंट मैन पावर उपलब्ध नहीं है। दूसरा सर ये भी आया एक सुझाव की रादर देन डिपेंडिंग ऑन स्टेशनरी सेंटर्स हम लोग को मोबाइल सेंटर्स, एआई बेस्ड सर्विस डिलीवरी एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विस डिलीवरी, मोबाइल डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन प्लेस ऑफ स्टेशनरी लैब्स, इस पर भी इसके बारे में भी विचार करना चाहिए सर। एक सर पैरावेट एजुकेशन के बारे में भी ये सुझाव आया कि पैरावेट एजुकेशन टोटली अनरेगुलेटेड है सर, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है सर। तो जिस तरह से नर्सिंग काउंसिल है उसी आधार पे इनकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए भी सर पैरावेट काउंसिल से स्थापित की जाए, इस पर भी सर विभाग एक अलग से एक रेगुलेशन पे काम कर रहा है सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। एक और बहुत अच्छा सुझाव आया कि सर हम लोगों को प्रोड्यूस फॉर द मार्केट सर, तो कुछ डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोडक्शन हो सकता है, कुछ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए हो सकता है। तो प्रोड्यूसर नो दैट किस मार्केट के लिए वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए इंटीग्रेटेड ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म थ्रू एनडीएलएम भारत पशुधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सेस करने के लिए ट्रेसेबिलिटी इज ए बिग रिक्वायरमेंट। तो भारत पशुधन पोर्टल को रीओरिएंट करके सर उसमें इंटीग्रेटेड ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म को भी स्थापित करने के बारे में सुझाव आया सर। एक सर लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर डिजीज सर्विलांस एंड प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन भी स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें सर जैसा मैंने शुरू में अपने प्रेजेंटेशन में बताया था सर, लेबोरेटरी नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग अभी काम इस 16 फाइनेंस कमीशन में हम लोग इस पर काम करेंगे सर। बट एक सुझाव ये भी आया था कि प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, उनको भी अगर हम अपने नेटवर्क में रोप इन करेंगे तो हमारी जो डिजीज सर्विलांस और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बेहतर हो सकता है सर। डिजीज फ्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स के बारे में सुझाव आया सर। हमारे यहाँ सर पोल्ट्री इंडस्ट्री में छोटे छोटे जोन्स करीब 44 जोन्स को डिजीज फ्री जोन्स के रूप में नोटिफाई किया हुआ है सर, वहां से एक्सपोर्ट्स कैन बी मेड सर। इसी लाइंस पे सर अन्य लाइव स्टॉक के बारे में भी ये सुझाव आया कि एक्सपोर्ट फ्री जोन्स को स्थापित करने पर भी हमको विचार करना चाहिए सर। एक सर ये भी सुझाव आया कि एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको भी हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। मॉफ्पी की बहुत सारी स्कीम्स है सर, उनसे हमारे जो हम लोग जो प्रस्तावित कर रहे हैं उसको कन्वर्जेंस की भी आवश्यकता है। मॉफ्पी की भी स्कीम्स हैं, एमएसएमई की स्कीम्स हैं सर, और उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए सर भी आवश्यकता है। दूसरा सर प्राइवेट सेक्टर के कुछ सीमेंट स्टेशन के पार्टिसिपेंट्स थे, उनका कहना था कि सर प्राइवेट सेक्टर के जो सीमेंट स्टेशन हैं उनको एक तो क्या है कि सर सभी स्टेट्स के अलग अलग रेगुलेशंस हैं सर। तो एक सीमेंट स्टेशन अगर 12 स्टेट्स में काम कर रहा है तो उसको 12 स्टेटों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसको सब्जेक्ट होता है वो 12 स्टेट के रेगुलेशंस पे सर। तो वो भी एक सुझाव आया था कि इंटर स्टेट जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए कोई इस तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म बने कि वो एक जगह पर ही रजिस्ट्रेशन करा लें और ऑपरेट कर सकें। दूसरा सर प्राइवेट सीमेंट स्टेशन वालों का सुझाव ये था कि सर जेनेटिक मेरिट के एनिमल्स जो हैं सर वो आप गवर्नमेंट के सीमेंट स्टेशन को उपलब्ध कराते हैं, प्राइवेट सेक्टर के सीमेंट स्टेशन को जेनेटिक मेरिट एनिमल्स आर नॉट बीइंग मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट सिस्टम सर। तो उनका कहना था सर जब जेनेटिक मेरिट के एनिमल्स हमको नहीं मिलेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ सीमेन वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो हमको भी एट पार विद गवर्नमेंट सीमेंट स्टेशन कंसिडर करके हमको भी जेनेटिक मेरिट के एनिमल्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए सर। एक सर कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी था कि सर मॉफ्पी और एमएसएमई के इंस्टीट्यूशंस उनको हम रोप इन करके हम हमारे इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड करने का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। डी रिस्किंग मैकेनिज्म पे खासतौर से हमारी जो इंश्योरेंस की स्कीम है और क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसमें सर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा सुझाव था कि ये एक अच्छा स्टेप है कि हम इस सेक्टर स्पेसिफिक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आए, क्योंकि उससे जो न्यूएंसेज है सेक्टर की सर वो एड्रेस हो सकते हैं। एक जेनरिक स्कीम में सर वो न्यूएंसेज कभी कभी एड्रेस नहीं हो पाती है। दूसरा एक सुझाव आया कि आप 75% जो हम लोग नरेश एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मंत्री जी चाह रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ में आप आगे कर लें इसको कंक्लूड। बस ये लास्ट स्लाइड है, दिस इज द लास्ट स्लाइड आई थिंक। सो सर एक सुझाव ये भी आया सर कि नॉर्थ ईस्ट और अंडर रिजर्व्ड एरियाज में सर
हम कुछ क्रेडिट गारंटी को क्या बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 75% ऑफ द लोन क्रेडिट गारंटी प्रस्तावित किया था, तो नॉर्थ ईस्ट और अंडर सर्व्ड एरिया के लिए ये भी आया कि इसको कुछ बढ़ाया जा सकता है सर। और जो केसीसी है सर एनिमल हस्बेंड्री में, उसके लिए सुझाव आया कि सेक्टर स्पेसिफिक केसीपी हो सकते हैं, केसीसी हो सकता है क्या, जैसे पोल्ट्री के लिए अलग केसीसी हो सकता है, गोट्री के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि सभी सेक्टर्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं सर। दूसरा सर, एक बैंकिंग क्रेडिट के संबंध में सुझाव आया कि बैंकों की सर कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस एंड आउटरीच के लिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में बैंकों की जानकारी के अभाव में भी एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट फैसिलिटी एक्सपैंड नहीं हो पाती। दूसरा एक और सुझाव भी आया कि सर क्रेडिट वर्दीनेस का जो अभी पैमाना है मोस्टली वो उनका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्ट एस्पेक्ट जैसे उनका वेदर दे आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंसेस, क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट डिजाइन, ये सब पे भी उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस किया जाना चाहिए। सर हमारे जितने भी प्रोग्राम है उसमें मोस्टली नेशनलाइज बैंक ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक सुझाव ये भी आया कि एनबीएफसी एंड स्मॉल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके। सर एक लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये सुझाव आया कि सर फेडरेशन, हम लोग एक फेडरेशन के कॉन्सेप्ट पे भी काम करें ताकि लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है उसकी बेटर मार्केटिंग हो सके। सर एक लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया था सर, और उनका ये कहना था कि सर हमको वर्किंग कैपिटल मिलने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आप अपनी योजनाओं में कुछ लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता के बारे में भी हम सोचें सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट सर, इसमें वे फॉरवर्ड सर, क्योंकि हमने सर ये कभी कभी जितने भी हमारे इंटरवेंशन सर इनकी गाइडलाइंस इत्यादि काफी एडवांस स्टेज ऑफ प्रिपेयर्डनेस पे हैं सर। जो भी सुझाव हमारे को पैनलिस्ट में ने अभी दिए हैं सर, उनको हम हमारी गाइडलाइंस में सर इनकॉर्पोरेट करके सर वी आर प्रपोजिंग टू फाइनलाइज दिस गाइडलाइन बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सर। और उसके बाद सर हम लोग इसको रोल आउट करने का हमारा प्लान है सर पूरे इंटीग्रेटेड इंटरवेंशन को सर। और साथ ही सर जो हमारे डीएफएस की स्कीम्स है, मॉक्पी की स्कीम्स है, एमएसएमई और नाबार्ड की स्कीम्स है, इनके साथ विभाग क्लोजली काम करके जो कन्वर्जेंस उनके साथ हो सकता है उसको हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू नरेश सर। अब मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, आप अपना प्रस्तुत करें। नमस्कार सर, रूरल डेवलपमेंट का स्लाइड कृपया लगा दें। सर ये हमारा जो विषय है शी मार्ट सर, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्केटिंग एवेन्यूज फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट सर, ये हमारे जो प्रतिभागी थे लगभग 40 लाख से ऊपर लोग थे सर, जिसमें 40,000 से अधिक डे एनआरएलएम और एसआरएलएम के स्टाफ थे सर। 35 लाख से अधिक हमारे एसएचजी के मेंबर्स और प्रोड्यूसर कलेक्टिव्स के मेंबर्स थे, और 5 लाख से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स थे। नेक्स्ट सर, ये हमारे 10 पैनलिस्ट और 10 इंटरवीनर थे। ये हमारे कई तरह के जो पार्टनर्स हैं वो सारे थे इसमें सर, कुछ राज्य सरकार के भी सीनियर ऑफिसर्स थे सर। नेक्स्ट सर, ये हमारा बजट अनाउंसमेंट था। ये है सर, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द लखपति दीदी प्रोग्राम, आई प्रपोज टू हेल्प विमेन टेक द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम क्रेडिट लेड लाइवलीहुड्स टू बीइंग ओनर्स ऑफ एंटरप्राइजेस। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी मार्ट्स विल बी सेटअप एज community owned retail outlets within the cluster level federations through enhanced and innovative financing instruments. Next सर, ये जो मुख्य बातें थी जिनके ऊपर हमारी चर्चा हुई सर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, इसमें ओनरशिप क्या हो, मैनेजमेंट किस प्रकार का हो सर। इसमें मुख्य बात जो उभर के आए कि कम्युनिटी ओन करे लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए इसको चलाया जाए सर। फाइनेंशियल मॉडल में सर ये आया कि इन्वेस्टमेंट हमारा ब्लेंडेड तरीके का होना चाहिए, जो हम सीआईएफ देते हैं, जो कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड देते हैं, गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स और जो डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सर, उनका सबका मिला जुला ये होना चाहिए। और क्वालिटी तथा रेगुलर सप्लाई सर जरूरी है प्रॉपर मार्केटिंग के लिए, तो ईयर द राउंड सप्लाई बाय प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर का ट्रस्ट बरकरार रहे सर, और ट्रेसेबिलिटी रहे, इस पर बात हुई सर। और मार्केट कनेक्ट किस प्रकार का हो सर, B2B जो बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, और बिजनेस टू गवर्नमेंट सर, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट में थोड़ी इनको प्राथमिकता देने की जरूरत है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको। उसके बाद स्केल के ऊपर बात हुई सर। अभी हम लोग कई राज्यों में कई तरह के मार्केटिंग के काम हो रहे हैं सर, कई राज्यों में इस तरह के जो आउटलेट्स है बने हैं,
उनके साथ मिलके जहां ये बात आगे बढ़ी है सर, उनके साथ मिलके पहले इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिर उसमें जो सफलता मिलेगी उसके आधार पर सर उसको स्केल करेंगे। और स्टेबिलिटी के ऊपर भी चर्चा हुई सर, जो फाइनेंस तथा बाकी चीजें हैं उनमें जो रिस्क जो इन्वॉल्व है उनका मिटिगेशन किस प्रकार से किया जाए सर। नेक्स्ट सर, ये जो सजेशंस आए, सजेशंस इन कैटेगरीज में थे सर, मैं उनको थोड़ा सा विस्तार में बता दूंगा सर। पहला था सर कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स, जो कि मार्केट ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए सर। एंटायर वैल्यू चेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, न कि सिर्फ छिटपुट जहां तहां हम सुधार करें। और डेडिकेटेड मार्केट इकोसिस्टम्स बनने चाहिए सर। इसमें कन्वर्जेंस की भी बात आई सर। जो पैक्स हैं, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके साथ भी मिलकर काम करने की हमको जरूरत है। और जो कुछ जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब जो है सर, वो वीबी जी राम जी में चूंकि लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जोर दिया गया है सर, तो उसको भी हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके जरिए बनाने के बात के ऊपर भी चर्चा हुई सर। और ओएनडीसी का जो नेटवर्क है, मार्केटिंग का जो ओएनडीसी का नेटवर्क है, उसको लेवरेज हमको करना है सर। उसके बाद सर इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर में कम्युनिटी ओन्ड लिंकेज फैसिलिटीज हो सर, जो मैंने पहले बताया सर, प्रोफेशनल ओवरसाइट और मैनेजमेंट हो, और इक्विटी पार्टिसिपेशन यथासंभव सीएलएफ्स का हो। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में सर ब्लेंडेड फाइनेंस, इनोवेटिव फाइनेंस के ऊपर चर्चा हुई। कैपेसिटी बिल्डिंग जो सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री ने भी बताया सर, कैपेसिटी बिल्डिंग बैंकर्स का किए जाने की जरूरत है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों में पता ही नहीं चल पाता है कि दीदियों का जो एक होलिस्टिक फाइनेंसिंग किस प्रकार से हो उनके एंटरप्राइज का। और वर्किंग कैपिटल सर, जो कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्रेडिट गारंटी, जो विभिन्न प्रकार के क्रेडिट गारंटी होते हैं, वो इनको देने की जरूरत है सर एंटरप्राइज के लिए। सर ब्रांडिंग एंड मार्केट पोजीशनिंग के ऊपर सर सजेशंस आए, उसमें सेगमेंटेशन पर जोर दिया गया सर। मतलब जैसे बेसिक सेगमेंट है, चाहे प्रीमियम सेगमेंट है, इसमें सर ये भी बात बहुत खुल के सामने आई सर कि जो हम बेचते हैं तो वो कमोडिटी नहीं बेचते हैं सर, वो कल्चर, सिविलाइजेशन, नैरेटिव, स्टोरी, ये सब चीजें बेचते हैं सर। तो इसलिए उस पर बहुत जोर दिए जाने की जरूरत है सर। ये सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग में सर इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट रेडीनेस, ट्रेसेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, और एक पूरा जो एग्रीगेशन होता है सर, उसमें इंडिया पोस्ट की भी सुविधा हम लोग दे सकते हैं सर, इंडिया पोस्ट का जो नेटवर्क है। अगला था सर डिजिटल और फिजिकल रिटेल इकोसिस्टम होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल नहीं। तो इसमें जो हमारा सर एग्रीकल्चर स्टैक है, उसकी तर्ज पे रूरल स्टैक बन रहा है, जिसमें तमाम जो भी एक्टिविटीज हैं दीदियों की वो भी रिफ्लेक्ट होंगी सर। तो उसका भी उसकी भी मदद दी जा सकती है। उसका डेटा जो है सर प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है, और वो उसकी मदद से सर आगे का काम कर सकते हैं। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन मैंने उल्लेख किया सर, ये B2C, B2B और B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, इस सेक्टर में बहुत जरूरी है सर। गवर्नमेंट में इनको कुछ प्रेफरेंस दिए जाने की जरूरत है प्रोक्योरमेंट में। स्ट्रेंथनिंग लोकल रूरल एंटरप्राइजेस सर, सर्विस सेक्टर भी रहे इसमें, सिर्फ गुड्स की बात नहीं हो। और कम्युनिटी ओन्ड लिंकेज फैसिलिटीज हो सर। फिर उसके बाद था सर फेज्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, सर मैंने उल्लेख किया सर, ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो और ये फेज्ड मैनर में करें सर। पहले जहां बहुत सक्सेसफुल हैं जो राज्य, उनके साथ मिलकर को ब्रांडिंग के जरिए आगे बढ़ें सर, और फिर उस लर्निंग के आधार पर फिर उसको स्केल करें। उसके बाद सर ये था कि मार्केट बैक, ये पूरा सिस्टम बनेगा तो ये लखपति दीदी का जो हमारा जो संकल्प है सर, उसके लिए एक मार्केट बैकबोन का काम करेगा। नेक्स्ट सर कुछ राज्यों से हमने चर्चा की सर। झारखंड में बहुत अच्छा काम हुआ है सर, पलाश। तमिलनाडु में सर माठी स्टोर्स करके, दे हैव बिल्ट माठी स्टोर्स सर, जिसमें कि पहले से काम कर रहे हैं जी सर। They have done very good work, sir. Premium retail stores, they call them Mathi Experience Stores. They have been established in urban centers to showcase premium products and to enhance visibility. Sir, they have 25 common marketing facility centers equipped with modern tech for techno-managerial training. उसी तरह से सर झारखंड में जो पलाश में काम हुआ है सर, वो भी सर बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है सर। इन्होंने जो स्टैंड अलोन मार्ट है उससे आगे बढ़कर ट्रांजिशन किया है सर, ओमनी चैनल में चले गए हैं सर। जैसे पलाश का आटा और बेसन जो है कॉमर्शियल सुपरमार्केट चेन में सर मिलता है, और विथ ब्लिंकिट, अपना मार्ट जो क्विक कॉमर्स है उनके साथ भी टाई अप ये लोग कर रहे हैं सर।
और उसी प्रकार से सर छत्तीसगढ़ में सी मार्ट करके लोगों ने इसके ऊपर काम किया है सर। ये रिटेल आउटलेट स्थापित हुए हैं सर एसएचजी और लोकल एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल और हर्बल प्रोडक्ट्स सर ये बेचते हैं। तो इन सब राज्यों में सर उसी प्रकार से राजस्थान में भी बहुत आगे का काम हुआ है सर। तो इनके साथ भी हमारी चर्चा हुई। नेक्स्ट सर, ये आगे का जो हमको आगे जो काम करने हैं सर, जो अगले जो कदम है सर, जो वाइडर कंसल्टेशन करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट्स, यूटीज, मार्केट प्लेयर्स, बैंक्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कलेक्टिव्स, इन सब के साथ सर गाइडलाइंस और एसओपीज और रोल आउट स्ट्रैटेजी हम लोग अभी अगले कुछ महीनों में इसको तैयार करेंगे सर, और ग्राउंडिंग इसको फेज्ड मैनर में करेंगे जैसा सर मैंने उल्लेख किया। सर हमारा इतना ही है। हाँ सर, अब मैं राज्य मंत्री एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग श्री प्रोफेसर एसपी बाघेल जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सर संभवतः आपका माइक ऑन नहीं है सर, उसको माइक ऑन कर दीजिएगा, आवाज आपकी नहीं आ रही। आदरणीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, माननीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय श्री जॉर्ज कुरियन साहब, सचिव मत्स्य पालन विभाग डॉक्टर अभिलेख लेखी जी, सचिव ग्रामीण विकास श्री सदेश कुमार जी, सचिव पशुपालन श्री नरेश पाल गंगवार जी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण श्री अतीश चंद्रा जी, डायरेक्टर जनरल ICAR, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण और इस वेबिनार में जुड़े सभी सम्मानित प्रतिभागीगण। आज के इस पोस्ट वेबिनार जो एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर आयोजित किया गया है, उसमें अपने विचार रखने का अवसर मुझे जो प्राप्त हुआ है, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां हम सब मिलकर कृषि और ग्रामीण विकास के भविष्य की दिशा पर विचार कर रहे हैं। और आज के इस वैचारिक मंथन से जरूर कुछ न कुछ ऐसा अमृत निकलेगा जो किसानों, मत्स्य पालक, पशुपालक, रूरल ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के काम आएगा। आज सुबह जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन से इस पोस्ट बजट वेबिनार का शुभारंभ किया था, तो उन्होंने हमें स्पष्ट दिशा प्रदान की है कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य तभी संभव है जब हमारे देश के किसान समृद्ध हों। हमारे किसान केवल देश के करोड़ों नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारी आर्थिक संरचना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं, चाहे वो किसान फसल उत्पादन करने वाले हों, पशुपालन करने वाले हों, मछली पालन करने वाले हों। इन सभी का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने शुरुआत दिनों से इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि किसानों के हितों की रक्षा हो, उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किसानों की आय को दुगना करने का जो आह्वान किया है, वो आज जो वेबिनार में विभाग हैं, चाहे वो कृषि हो या पशुपालन हो, फिशरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, उन्नत किस्म के पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, इसके अलावा भेड़ पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और उसके अलावा औषधि खेती, इन्हीं के द्वारा ही हम किसानों की आय को दुगना कर सकते हैं, जिस पर आज चारों विभागों ने बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया है। इस पोस्ट बजट वेबिनार में आज 8 महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। हमारे दोनों सचिव महोदय ने आज की परिचर्चा में जो विभिन्न संगठनों के द्वारा, किसानों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, FPOs द्वारा, NGOs द्वारा, विभिन्न सोसाइटीज द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं विभाग की बहबूदी के लिए, उस आपको शेयर किए और इन सारे सुझावों को नोट किया गया है। उस पर गंभीरता से विचार करते हुए भविष्य का रोड मैप भी हम लोग तैयार करेंगे। चिंतन और मंथन की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री का जो दिल के बहुत नजदीक है, वाक्य की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के तहत ये आज जो किया गया है। मैं
यदि हम भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को देखें तो पशुपालन, डेयरी आज किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 करोड़ किसानों की आजीविका पशुधन पर निर्भर है। हम सब लोग गांव देहात से ही आए हैं और ये एनिमल हस्बेंड्री किसानों की पैरेलल इकोनॉमी है और में 90% से अधिक लघु सीमांत किसानों का ये देश है और लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों के पास ही पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कितना बड़ा सेक्टर है कि 12 से 26% तक घरेलू आय पशुधन और डेयरी क्षेत्र से आती है। यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो 2022-23 में पशुधन क्षेत्र ने कुल जीबीए में लगभग 5.5% का योगदान किया है। इसी अवधि में पशुधन क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य लगभग 18.99 लाख करोड़ रहा है, जो धान और गेहूं से भी अधिक है, और दुग्ध उत्पादन 12.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसी से अंदाज लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है। एक दशक में पशुपालन क्षेत्र में जो हम 65 बनाम 10-20 बात पर जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि हम 14-15 के आंकड़ों से 24-25 तक ही बताते हैं आजकल, तो इसमें सभी चीजें डबल या ट्रिपल हुई हैं। उदाहरण के तौर से दुग्ध उत्पादन 146.3 मिलियन टन था, 10 साल में 248 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो हमें विरासत में मिली थी 319 ग्राम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग ने 485 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। इस प्रकार से अंडा उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 14-15 में हमें विरासत में मिले थे 7,848 करोड़ अंडे का उत्पादन था, जो 24-25 में जस्ट दुगना 14,911 करोड़ अंडे हो गए हैं और आज अंडा उत्पादन में विश्व में हम दूसरे स्थान, मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर हैं। डेयरी सहकारी प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली, आज लगभग 2 करोड़ पशुपालक इससे जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दुग्ध उत्पादन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। सहकारी डेयरियों की दूध प्रसंस्करण क्षमता 24-25 में 1,175 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। ये एक जब से कोऑपरेटिव विभाग बना है उससे भी हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में, डेयरी सोसाइटी बनाने में सहायता मिल रही है। आरजीएम के अंतर्गत नई प्रजनन तकनीकी को बढ़ावा मिल रहा है, सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयोग हो रहा है, आईवीएफ तकनीकी इस्तेमाल हो रही है, जीनोमिक्स आधारित प्रजनन, 24 आईवीएफ प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं और राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ पशुओं को डिजिटल ट्रैकिंग की जा चुकी है। सर, जो महत्वपूर्ण जो गेम चेंजर होगा, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ज्यादा देख ही चुके हैं अन्ना प्रथा को, जो छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया में खासतौर से, और हमारा भी जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में अन्ना प्रथा, इसलिए कि ब्रीड अच्छी नहीं है गायों की और कम दूध देने वाली वो ब्रीड है, उसकी वजह से किसान छोड़ देता है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे, ना हल चल रहा है, ना रहट चल रही है, ना पोलू चल रहा है, ना बैलगाड़ी चल रही है और ना गाय हो रही है। इसलिए मेन जो है वो नंदी महाराज यूजलेस हैं, इसलिए वो प्राइसलेस हैं। इसलिए हमारे विभाग ने पूरी कोशिश की है कि कृत्रिम गर्भाधान हो, कृत्रिम गर्भाधान भी सेक्स सॉर्टेड सीमन से हो। उसके रिजल्ट आ रहे हैं कि 90% बछिया पैदा हो रही है, वो भी साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी या गिर गाय का बच्चा है, तो वो पैदा होगा तो 10-20 हजार की होगी, और नंदी महाराज पैदा होंगे तो पूर्ण परजीवी होंगे, उनकी कोई यूजलेस है, इसलिए प्राइसलेस है। तो इस पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी कम पैसे पर सेक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध करा रहा है। हम आपके विभाग से भी उम्मीद करेंगे कि जो कृषि विभाग के भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, खासतौर से जो सचिव वगैरह होते हैं, ईडीओ पर एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं, वो भी किसानों को अपनी जब मिला करें तो बताया करें कि सेक्स सॉर्टेड सीमन एआई द्वारा कराएंगे तो बछिया पैदा होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने जैसे जिक्र किया है कि हम एफएमडी मुक्त भारत चाहते हैं, तो 130 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मैं देश में जहां भी जाता हूं तो ये जरूर पूछता हूं कि क्या टीकाकरण हुआ, तो किसान एक बात जरूर कहते हैं कि हाँ, साल में 2 बार जो है पशु चिकित्सक या पैरावेट्स उनके घर आते हैं और उसके द्वारा वो एफएमडी, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेजेज में चल रहे हैं। संतोषजनक स्थिति है।
इसी प्रकार से सर कई घोषणाएं की गई हैं कि बजट में 20,000 से अधिक, जैसा सचिव महोदय ने बताया था कि अतिरिक्त पशु चिकित्सक पैरावेट पेशेवर की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र में भी पशु चिकित्सा कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब स्थापित करने के लिए ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना प्रस्तावित की है। उद्यमता को बढ़ाने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम चल रहा है। पशुधन उद्योगों का आधुनिकीकरण, डेयरी पोल्ट्री आधारित एकीकृत वैल्यू चेन, लाइव स्टॉक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसा सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दी गई अभी प्रस्तुति जो आपके सामने थी, और इस सेमिनार में प्रतिभागियों द्वारा पशुपालन क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। रिपीटिशन है, फिर भी कहना चाहूंगा कि आज की चर्चा में यह स्पष्ट हुआ है कि भेड़, बकरी और सुअर पालन में संगठित मूल्य श्रृंखला अभी स्थापित नहीं हो पाई है, इसलिए इसे प्राथमिकता के साथ विकसित करना आवश्यक है। भेड़ और बकरी जैसे छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रजनन तकनीकों को, जैसे एआई है, आईवीएफ है आदि, भ्रूण ट्रांसप्लांट है, इस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। पशुधन उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रभावी और निरंतर टीकाकरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सा अवसंरचना को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उत्पादन लागत कम करने और पशुपालन की आय बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। पशु स्वस्थ होगा, प्रोटीन प्रॉपर होगी, सब मिनरल्स होंगे, तभी मांस की भी वृद्धि होगी और दुग्ध की भी वृद्धि होगी। पशुपालकों के जोखिम कम करने के लिए इधर कम रुझान है किसानों का। अभी स्वयं इंसान अपना 20 रुपए वाला बीमा, 436 रुपए वाला बीमा 11 साल हो गए नहीं करा पा रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है कि जब उसके पशुओं के बीमा की बात की जाती है। लेकिन लगातार विभाग प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा बीमे के द्वारा कवरेज हो। गोबर से बायोगैस, जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने सुबह जिक्र किया था, कि सीएनजी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्य करना आवश्यक है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मत्स्य पालन में मैं कहना चाहूंगा कि ये 65 बनाम 10 में, ये 65 साल माने 13-14 में 95 लाख टन मछली उत्पादन था। सर अब 197 हो गया है, माने दुगने से भी ज्यादा मछली उत्पादन हुआ है। इसके पीछे जो हम बचपन से व्हाइट रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ते आए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 में जब ब्लू रिवोल्यूशन एक शब्द दिया और उसमें तमाम योजनाएं बनाई, और खासतौर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जब लागू की है, उसके रिजल्ट आप देखिए कि लगभग दुगना उत्पादन हो गया है। सी फूड के प्रति लोगों की बहुत आजकल रुचि बढ़ी है। मैंने भी इस विभाग में नहीं आता तो ये शब्द ही नहीं सुना था कि सी फूड भी कोई चीज होती है। तो दुगने से अधिक हो गया। 13-14 में 30,213 करोड़ से बढ़कर 24-25 में 62,000, ठीक दुगना 408 करोड़ हो गया। वर्तमान अवधि में निर्यात में मात्रा के आधार पर लगभग 15% और मूल्य के आधार पर 23% की वृद्धि हुई है। ये तमाम अभी अमेरिका के जो हमारे पर प्रतिबंध थे उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि 12% बढ़ा भी था। मत्स्य क्षेत्र का हमने नए मार्केट ढूंढे थे। मत्स्य क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन जीबीए उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। 13-14 में 98,190 करोड़ था, और जो अब 3 गुना 3.41 लाख करोड़ हो गया। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लागू प्रमुख योजनाएं ब्लू रेवोल्यूशन, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। सरकार ने मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए पिछले दशक में लगभग 38,000 से लेकर 39,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेश किया है। हमने अभी लक्षद्वीप में एक मीटिंग करी, एक अंडमान निकोबार में, और टूना के बारे में जो विश्व में इसकी बड़ी मांग है, टूना फिशरीज के क्लस्टर के रूप में भी काम किया है, और तमाम एक्सपोर्टर्स को बुलाया था और लोगों ने बहुत रुचि ली है। मत्स्य क्षेत्र में अभी भी अपार संभावनाएं हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इसको 5 गुना तक कैचिंग हो सकती है। भारत के पास लगभग 32 लाख हेक्टेयर जलाशय है, जैसे अक्सर स्लीपिंग जाइंट कहा जाता है। आज हम लगभग 4.5 लाख टन उत्पादन कर रहे हैं, और इसकी क्षमता आज प्रधानमंत्री जी ने भी जो संभावना व्यक्त की है, इसको 20 लाख टन से अधिक की जा सकती है। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।
अमृत सरोवर जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में पिछले साल काम किया है, तो ऐसे इस बजट में भी कहा गया है कि 500 जलाशयों को अमृत सरोवर में, जहाँ साल भर पानी रहता है, पानी की क्वालिटी ठीक रहती है, रिजर्वायर्स हैं, और एकीकृत विकास की घोषणा की गई है, इससे भी फिशरी उत्पादन। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। इसके पास अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है, लेकिन मरीन फिशरी केवल 25% है। अब अभी भी 75% इनलैंड तब है जब हमारे तालाब इंक्रोच हो गए हैं, नदियां दूषित हो गई हैं, लगभग मर चुकी हैं या मृत प्राय है। लेकिन फिर भी इतना समुद्री तटीय क्षेत्र होने के बावजूद 75% इनलैंड फिशरी है। इसमें यह अमृत सरोवर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जलाशयों को क्लस्टर मॉडल भी विकसित किया जाएगा और लैंडिंग सेंटर्स, कोल्ड रूम, हैचरी, फील्ड यूनिट और डिजिटल मॉनिटरिंग के द्वारा हम ये वृद्धि कर सकते हैं। तो निर्यात बढ़ाने के लिए कोस्टल वैल्यू चेन मिशन भारत के समुद्री खाद्य निर्यात के बढ़ाने में सहायक होगा। इसका एक बड़ा सिस्टम है कि मछली पकड़े, फिर उसको सेग्रीगेट किया जाए, उसके काटा जाए, आइस प्लांट में रखा जाए, पैकेजिंग की जाए, प्रोसेसिंग करने के बाद और ब्रांडिंग करते हुए और फिर मेनलैंड तक पहुंचाई जाए। तो एक पूरा चेन है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछलियों पर ये बहुत अच्छा हुआ है कि कस्टम ड्यूटी से छूट देने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इससे भी एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आज के वेबिनार के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र की संबंधित जो विस्तृत चर्चा हुई है, उसमें सचिव मत्स्य पालन द्वारा जो प्रस्तुति दी गई थी, उससे ब्रेकआउट सत्र के प्रमुख निष्कर्षों को मैं साझा करना चाहूंगा कि इस ब्रेकआउट सत्र में लगभग 15,000 प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। मत्स्य क्षेत्र की पूरी मूल श्रृंखला से विविध जी सर। Yes, मैं केवल इतना निवेदन कर रहा था कि बहुत गंभीरता से और उपयोगी विचार विमर्श आपने किया है पूरी टीम ने, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। मेरी दिक्कत केवल एक कनाडा के एक प्रतिनिधिमंडल को 6 बजे मैंने समय दिया था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 5-10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन मुझे सूचना मिली इसलिए थोड़ा ब्रीफली बता देना। नहीं, जितना जो मैं कहना चाह रहा था वो सचिव मत्स्य पालन ने, अभिलेख लेखी जी ने अपने प्रेजेंटेशन में वही सब बातें कही हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी बात समाप्त करूं। जय हिंद। मैं क्षमा चाहता हूं, बीच में मैंने आपको टोका, लेकिन चूंकि विदेशी प्रतिनिधिमंडल था इसलिए मुझे लगा कि सर अब मैं आदरणीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से अनुरोध करना चाहूंगा कि सर हम लोग को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अभी हम जिनको बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, हमारे पशुपालन और मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के हमारे राज्य मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, सहयोगी मंत्री मेरे जॉर्ज कुरियन जी, कमलेश पासवान जी, भागीरथ चौधरी जी, हमारे सभी सचिवगण और जुड़े हुए सभी मित्रों, सचमुच में बहुत उपयोगी चर्चा इस वेबिनार के माध्यम से हुई है। प्रधानमंत्री जी का प्रारंभिक उद्बोधन हमारे लिए एक मार्गदर्शन था और हमने देखा कि जो सचिवगणों ने चर्चा का सार बताया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किए थे और बजट में जिन लक्ष्यों का उल्लेख था, लगभग उसी के आसपास हम सबने विचार विमर्श किया है। पार्टिसिपेशन अद्भुत था। अब ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का विजनरी सोच है कि ऐसे चिंतन मंथन में लाखों लोग जुड़ जाए। पहले तो हम लोग टीम बनाते थे कि छोटी टीम ज्यादा अच्छा विचार विमर्श करेगी, लेकिन जो अलग अलग सचिवगण बता रहे थे, कोई कह रहा था 40 लाख हमारे उसमें जुड़े थे, कोई कह रहा था 50 लाख जुड़े थे। एक जगह तो किसानों वाले में आया कि नहीं, लाखों में नहीं करोड़ों में मामला पहुंच गया। तो ये चर्चा बहुत व्यापक हुई है। अब चर्चा जो हुई है वो हमारे सामने आई है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, समय भी इसकी इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन एग्रीकल्चर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो हमारे सभी विषय है, भारत विस्तार को मैं थोड़ा अलग रखूंगा, लेकिन कोकोनट हो, कैजू हो, कोको हो, कॉफी हो, चंदन हो, अगर हो, इन सब पर जो विचार किया तो हमको 5-6 चीजें करने की जरूरत है। एक, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। अभी भी हम
अगर एवरेज प्रोडक्शन देखें तो दुनिया के बाकी देशों से हम पीछे हैं। तो एक तो हमको बढ़ाना है, उसके लिए कई तरह के उपायों की यहां बातचीत हुई है। बढ़ाने के एक तरीका एरिया का विस्तार भी करना है, क्षेत्र को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हमारी फसलें ऐसी है जो कैश क्रॉप तो हैं लेकिन एरिया लगभग उनका स्थिर हो गया है, तो हमको एरिया का विस्तार भी करना पड़ेगा। एक चीज लगभग सारे प्रेजेंटेशन में सामने आई कि हमें यील्ड बढ़ाने के लिए विशेषकर जो हमारी नर्सरी है, जो पौधा है, प्लांट है, वो हमको क्लीन चाहिए। रूट बिल्ड जैसी बीमारी जो कोकोनट में लगती है उसने ये सिद्ध किया, और पुराने बाग जिनमें उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, तो हम नए बाग जो लगाएं उनमें हमको क्लीन प्लांट की जरूरत है, क्योंकि एक बार प्लांट लगा दिया तब तो किसान को पता नहीं रहता कैसा है। 3, 4, 5 साल बाद जब उत्पादन देना उसने शुरू किया तब पता चलता कोई बीमारी लग गई। तो ये रोग रहित जिसको हम कहते हैं वो प्लांट हम कैसे, उसके विभिन्न उपाय सुझाए हैं अलग अलग, उसके विस्तार में नहीं जा रहा मैं, लेकिन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन में लगने वाला जो व्यय है, उत्पादन की लागत जिसको हम कहेंगे, उसको कम करना है। फिर वैल्यू एडिशन, क्योंकि 3 चीजें हमारी कृषि में मूल्य है। एक, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना, और तीसरी किसानों की इनकम बढ़ाना। और इसलिए किसानों की आय बढ़े, इसलिए गुणवत्ता एक प्रश्न है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम कैसे पैदा करें। एक बात बार बार आई कि हम इंपोर्ट क्यों करें, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ना चाहिए, हम घर की मांग तो पूरी करें। अब नारियल की गिरी हम बाहर से बुलाएं, इसकी जरूरत क्या है। और इसलिए हम उत्पादन भी बढ़ाएं, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी का कैसे हो वो। फिर एक वैल्यू एडिशन की बार बार बात आई है कि कैसे वैल्यू एडिशन करें। जीरो वेस्ट की बात यहां आई अभी प्रेजेंटेशन में कि हर एक चीज कोकोनट की काम की है, तो हर एक चीज का उपयोग हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है। और एक डाइवर्सिफिकेशन की बात भी आई। हम बीच बीच में इन क्रॉप्स के हम अलग अलग क्रॉप्स को कैसे पैदा, चंदन अगर आता है 10 साल में, 15 साल में, तो तब तक किसान वेट नहीं कर सकता कि उसकी कोई आमदनी ही ना हो। इंटरक्रॉपिंग कैसे हो, या तब तक उसको आमदनी कैसे मिले, तो बैंक लिंकेज और बाकी चीजों पर हमको काफी काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम इंटरक्रॉपिंग को कैसे बढ़ावा दें, और उसके साथ साथ एक जो सब विभागों को जोड़ के लगता है मुझे, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, वो है कि हमारे यहां लैंड होल्डिंग काफी कम है, और कम लैंड होल्डिंग के कारण हमारे किसान की आमदनी भी कम है, लेकिन आजीविका आज भी 48% खेती पर ही निर्भर है। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अनाज के साथ साथ फल, सब्जियां जिसकी बात हम कर रहे हैं, या काफी, कोको, काजू जैसी हमारी फसलें, उनकी भी जरूरत है। उनके साथ साथ हमको जरूरत इस बात की पे पशुपालन भी किसान करे, मछली पालन भी करे, मधुमक्खी पालन भी करे, और कृषि वानिकी की तरफ भी बढ़े। हालांकि रेगुलेशन संबंधी कई दिक्कतों के कारण लोग चंदन अगर जैसी चीज लगाने में डरते हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि बांस तो घास है, वो लकड़ी है ही नहीं, क्योंकि जहां फॉरेस्ट का नाम आ गया तो रेंजर डेंजर बन जाता है, फिर किसान काट के ले जाए, इसी में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक कॉन्सेप्ट ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर का है, एग्रो फॉरेस्ट्री मत कहो। तो हमको रेगुलेशंस के बारे में कई बार ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी कि ये चीजें पैदा करें तो किसान को दिक्कत ना हो। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपने विचार भी किया, इस पर और गहराई से विचार कीजिए कि कैसे आसानी से किसान अपने उत्पाद को बाजार तक ले जा पाए, उसको दिक्कत और परेशानी ना हो। इसका विचार मुझे लगता है अत्यंत आवश्यक है। बाकी तो बहुत गहराई से एक एक सुझाव में बताऊं कि ये कहा, इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। बहुत गहराई से विचार हुआ है। हमको जो प्लानिंग करनी पड़ेगी, रूरल डेवलपमेंट के हमारे सचिव सी मार्ट की बात बता रहे थे, तो तेजी से हमने लखपति दीदी के टारगेट को अभी पूरा किया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया था, वो 1.25 साल पहले ही हमने हासिल कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि नहीं, अब 3 करोड़ नहीं 6 करोड़ बनाना है।
चिंता हमारी ये है कि ग्रुप तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो समुदाय के रूप में तो अच्छी आय कमा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल दीदी को बैंक लोन देने में आज भी हिचकते हैं, उनको मिलता नहीं है। अभी एक बैंकर्स के साथ जब ये 6 करोड़ का टारगेट हमारा तय किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हमने हैदराबाद में एक बैठक करके कई विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया और हमारे जो सरस मेले अब तक लगते हैं वो बहुत सफल हैं। वहां दीदियों को एक मार्केट मिलता है, बाजार मिलता है और उनको वो जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो उनके उत्पाद को अच्छी कीमत भी दिलाता है। तो हर जिले में अगर एक सी-मार्ट हो, आपने सारे पहलू उसके बताए हैं, उन पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन सी-मार्ट मील का पत्थर होंगे 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने के क्षेत्र में। अब दीदियों को केवल चटनी, पापड़, अचार या केवल बकरी पालन ये नहीं करनी, ये काम खराब नहीं, अच्छे हैं, लेकिन उद्यमी बनाने की दिशा में बढ़ना है। तो उस दिशा में आपने बहुत अच्छा विचार विमर्श यहाँ किया है, उसमें हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। और एसपी सिंह बघेल साहब ने कई चीजों के बारे में बहुत विस्तार से, पशुपालन और मछली पालन का क्षेत्र इतना विस्तृत है और उपलब्धियां इतनी अनंत है अपनी कि हम घंटों भी कहते जाए तो कम नहीं पड़ेगी। उपलब्धियां बहुत है हमारी, सब हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में। इसलिए जो उपलब्धियां अब तक है, मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। बघेल साहब और उनकी टीम को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पिछले वर्षों में पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त हमने वृद्धि दर हासिल की है, लेकिन फिर भी कई काम अभी करने की जरूरत है, जिसकी योजना हमने बनाई है। एक तो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे, कुछ चीजें जो हम तत्काल लागू कर सकते हैं। दूसरे ये कि अभी कुछ और विचार विमर्श की जरूरत है, तो वो चिंतन और मंथन हम लोग करके फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। फिर अभी ये विचार की प्रक्रिया और चलेगी। जैसे कोकोनट के बारे में कल ही हमने IIT चेन्नई में एक बैठक बुलाई है, जहां और स्टेक होल्डर्स आएंगे, उनसे बातचीत करके, और फिर हमारी पूरी चर्चा के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, अपना टारगेट तय करेंगे, उस तक पहुंचने का रोड मैप बनाएंगे, उस रोड मैप पर मेहनत से चल के हम अपने लक्ष्यों को फिर प्राप्त करेंगे। इतने अच्छे चिंतन के लिए मैं एक बार फिर सभी मित्रों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है हृदय से बधाई देता हूं। अलग अलग स्टेक होल्डर्स आए और उन्होंने बड़ी गहराई से चर्चा में भाग लिया। एक निवेदन में अंत में ये जरूर करना चाहूंगा कि अभी भी अगर किसी के दिमाग में कोई अच्छे सुझाव हो, विचार हो, तो संकोच ना करे, लिखित में भी हमको भेज दे, मेल कर दे, उन पर और गंभीरता पूर्वक हम सभी विचार करेंगे जो टीम यहां बैठी हुई है, और उनमें से जो जमीन पर उतारने लायक होंगे, जिनको हम नीचे इंप्लीमेंट कर सके, तो निश्चित तौर पर उनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, जो संकल्प लिया है, एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण का, तो कृषि क्षेत्र और एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर से ग्रामीण विकास सहित, उसको प्राप्त करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। हम लोग इस वेबिनार की कार्रवाई यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Your meeting has ended.